table. The battle for a spot in the semis is all open. It's all to play for at the Kingdom Valley National T20. Okay, here we are. We're in the last day of the round matches. It's Balochistan versus KP here at the Kingdom Valley National T20, match 29. The two teams arrived a little while ago, and they all said they have a lot of work to do, put their heads together. They've been losing games here in Multan. They need to win this to confirm their position in the top four. Whereas Balochistan are on a high. They won their last match and they are looking to get another 2 points and go right on top of the table. So it's all to play for on the last day of the round games. The league stage is about to end, and here we are. I'm going to bring in Marina. Welcome to you. And I would like to join you with me in the points table. And let's have a look at the points. What do they say today? Now, quite open after yesterday's win from ATF Southern Punjab. You look at 4 teams at 10 points. And if Khyber Pakhtunkhwa wins this, whoever gets 12 first, they'll confirm their position. ATF Southern Punjab needs another win. They've got 1 match left. They can come to 10 as well, and so can Northern. We'll talk about those two later, but Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, it's going to be one hell of a game because I think Khyber Pakhtunkhwa has had enough. They've been looking for that win, and they haven't found one as yet in Multan. Could this be the day? We'll bring you in, Marina, and we've been watching all the games up till now. What is it that KP is not doing suddenly and it's not working for them? I think, first of all, I feel that the pressure has started to get to them, and they have been losing in, you can say, about match planning. I think if you look at their batting, they're clueless. If you look at their bowling, they're clueless. They're just trying too hard to get things right, but what they're missing is how can they target the opposition in the areas where they are weak. So I think they need to just take a step back, leave everything out, and go with their plans and their strengths and make a good comeback. It's amazing the cricket that they've played. I mean, they've lost 4 games on a trot. It's only last evening that they slipped to number 2. Yeah, definitely. I mean, even in the last game, you can see the desperation in there. You can, if you talk to the players or the coach as well, they were desperate to win, and they said, that's not us, but we need to make a comeback. But again, it's just getting harder for them. I mean, you have to give credit to how Central Punjab have been gaining strength to strength, but it was ATF Southern Punjab. The way they came on, they had a plan. They knew that they've got a lesser target, and look how they improvised and took a step back in their batting as well. They waited for their moments, but what KP did was just they were going hard on just attacking without giving an ounce of think that how they can manage to grab those wickets. I think probably that's where they're lacking. It's all desperation, it's all anger, but when you're angry, you need to be calculated, and that's where they're missing. Hassan Khan bowled very well. He had brilliant figures, 3 for 21 yesterday, and he was their leader in terms of attack. Got injured in the end, but he got crucial wickets. And if you can find a spinner who can support with your frontline spinner or a bowler, then it's a blessing to have. Well, definitely, he's a classic act. I mean, whenever he comes onto the field, even with bat or ball, he likes to make an impact. The huge advantage he brings in the field, that's superb. I mean, you can count on this guy to give you breakthroughs. And especially Shoaib Maqsood, you had a chat with him, and he said that he was missing some time in the middle, and then he realized very quickly what the surfaces are like, and then he capitalized on the opportunity he got. I've been arguing with my colleague Marina and of course Ali Yunus about yesterday's pitch. You guys say that it is 185 plus, but what's the reason then that 4 innings and they just couldn't? They were all hovering around 160, and especially the last one was a low scoring game, so we can't really talk about that. But did you feel somewhere that it was not that easy to, you know, freely play the shots unless it's a bad ball? Well, I've been saying for the day one I walked here that, yes, it is a batting pitch, but again, the shot selection has to be important. It's not easy to play on the up. That's where you can marginalize a batting pitch or a bowling pitch. You cannot play the shots on the up and that easily, but runs are there. You have to apply yourself. Whoever has took a little bit of time and backed himself with a good technique and patience, you can see all around that those batters have succeeded in scoring runs. Even yesterday you saw that KP, they went on, they got a good start. Northern in the early game, the ball was coming on too nicely, but again, the shot selection, it wasn't there. You have to be a little patient with yourself and back yourself. Look at this Khyber Pakhtunkhwa, as you mentioned, 5 wins straight away
in Rawalpindi, and here they've had 4 losses. Today is the last opportunity for them, and it's also the last day. And we'll look at their performances. I mean, they've had close finishes, even the ones they've lost, one by 3 runs, one by 6 runs. So it's just that not being able to cross that finishing line with 2 points. Yeah, I think what happened actually was in Rawalpindi, they were getting away with few areas where they could have done better, and now they're totally exposed. Whether we talk about the middle order, we talk about some sort of bowling issues they had, and now it's just a total flip out for them. But again, I think they're a really good team. They show resilience, but again, it's just about keep your nerves calm and have an absolute plan to come out and bowl. You cannot be purposeless in any of your approach coming out. Also looking at the 50s, see only 50-plus scores in the power play. If you talk about the top 3 batters, I think there's an extra bit of load on Kamran Ghulam and sometimes on Sahibzada Farhan. When Sahibzada Farhan scores, they usually end up finishing a game closely or winning it. It's too much workload on two guys with the bat. Definitely. They had been relying on their opening partners or even the top 3, because whenever you can see their history, whenever they got a decent start up top, their middle order came in and they were well settled in to accelerate. But whenever they struggled at the top, the middle order did nothing. So yes, they had that cushion, and whenever that cushion is taken away, they have struggled as a batting lineup. Okay, time for us to check out the pitch, and it's going to be with well, Shah Faisal. He'll tell us exactly what we are going to be in store with. Last day of the group stage here at the Kingdom Valley National T20 Cup. Another hot and sunny afternoon. Just a little bit of breeze cooling things off, but at the moment it's 33 degrees and the humidity is at 62%. This surface has been used before. If you talk about it, there's some grass on it, but it's uneven covering of grass. And there are some patches which are quite bare and they look very shiny. Overall, it's more compact than some of the wickets that we've seen here before. Ball will come on nicely, and we may have a good day for the batters as well. But this little uneven covering of grass may create a little bit of uncertainty. Overall, pitches have been great in this tournament, and they've produced excellent contests. Another good day of cricket ahead. Okay, let's bring in Marina. What do you have to say about this? Well, again, it's not rocket science. Yes, the Pacers will have their time out there, but again, batting, you have to be patient. I've been keep on saying that. If you can resist those early 3 overs without giving away your wicket, you can capitalize on it. Okay, time for us to head to the toss. Young Ali Yunus out there with the 2 captains. It just don't get any tougher than this as we come to the last day of round games and we're still not sure about the semi-finalists. This match is no different. Very 2 good sides up against each other. It's a must-win game. I've got the 2 captains with me. Yasir Shah for Balochistan, Khalid Usman for KP, and Iqbal Sheikh is the match referee. We're all set to flip the coin. Yasir Shah will flip it. Head. Tails it is. Yasir Shah has won the toss. Yasir, क्या करेंगे? बॉलिंग करेंगे हम. आप क्या लगता है आपको कि इस पिच पे बॉलिंग करना ही बेहतर है? हाँ, थोड़ा सा विकेट चेंज लग रहा है और इंशाल्लाह यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कम से कम रन में कर लें. आपको एहसास होना चाहिए कि बिजनेस एंड है, आखिरी राउंड मैच है, तो गलती की गुंजाइश नहीं है. ये भाई कोशिश यही है कि आपके यहाँ पे T20 के मैचेस में आप गलतियाँ करते हो तो आप मैच हारते हो, लेकिन कोशिश करें कम गलतियाँ करें इंशाल्लाह. शान मसूद के जाने से फ़र्क पड़ेगा टीम कॉम्बिनेशन पे? शान मसूद की जगह बिस्मिल्लाह आया हुआ है, उन्होंने रिप्लेस किया है और आकिफ की जगह खुरम शहजाद खेल रहा है. राइट, ऑल द बेस्ट यासिर. थैंक यू. खालिद उस्मान बैटिंग कर रहे हैं. पहले आपके क्या इरादे थे अगर टॉस जीते? हम भी बॉलिंग करते हैं. क्या खास वजह लग रही है? आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे? जी बिल्कुल, स्ट्रेंथ पे ही खेलते हैं, हुए आ रहे हैं और रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बस मेहनत कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि विकेट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो टारगेट अच्छा सेट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा फिर हमारे लिए. मुल्तान लेग में काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं, तो अब गुंजाइश नहीं है, तो आज मेक श्योर करेंगे कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि अच्छी आपकी टीम चेंजेस आज की? टीम चेंजेस में अब्बास अफरीदी खेल रहा है, मास खान खेल रहा है और इसरारुल्लाह और इमरान खान जूनियर नहीं खेल रहे हैं, उनको रेस्ट करें. राइट, ऑल द बेस्ट खालिद उस्मान. थैंक यू. Right, the news is that Balochistan captain Yasir Shah has won the toss and decided to bowl first.
Okay, let's have a look at the teams. On the reinforcements have arrived, and when Shan Masood goes away, Bismillah Khan comes in, I think, deserving. He's been promoted from the second 11, so that will help them with the batting. And of course, he's a good keeper. Depends if Hasibullah is going to keep or him. And they've again brought in Khurram Shahzad, and they've left out Akif Javed. I want to ask you, KP, what is really their strength? Is it batting or bowling? I think it's definitely bowling. You can have a look at how they have a lot of options in there. Starting with the pace options, they've got really good paces. They've got utility spinners, and I feel that yes, if the batters can just do their role, a bit of their role, they have been struggling. No big, innings for them, but there are bits and pieces coming in together. But they need to step up their game today. So if bowling is their strength, then in hindsight, it's good that they're batting first. If they can score a reasonable amount of runs in 20 overs, they can fancy their chances with some good bowling if that's their strength. Yeah, that has been the case so far. If you look at them, they have been defending the scores quite well. But again, when we come and talk about their batting lineup, it's the top order. They need a certain push, a certain foundation to be set, and then the middle order can exploit. They've got someone like Sarwar and Amir Azmat who can come and be explosive, but they still need some foundation to capitalize on. Just looking at Balochistan, what can they do? They've got Bismillah, and you can't say that somebody's just arriving and been thrown in the middle. He's been playing second 11. He's been performing well. That's why he's come. So that adds a bit of strength into their batting. Also, their bowling, I don't know what the reason is why Akif Javed is left back, or was he just included to give Khurram Shahzad some rest. But absence of Shan Masood will dent them a bit. Well, definitely. It will dent them big time because he was very consistent. He was a stability factor in their middle order. And not just stability, he was, very explosive whenever the time came. But yes, I think Khurram Shahzad coming back in is a good option. We've seen that the pacers who've got some decent pace, who've got nip in their bowling, have been successful. So I feel that they seems a little bit balanced. But Bismillah, my biggest question will be at what number he will be batting, because he will be the main key today. He's the opener, the usual opener. I don't know if Asad Shafiq is going to slip himself down. We'll have to wait and watch. But if I was to ask you, who do you feel has a better chance in this game? You know the toss that KP have been asked to bat first. Which side would you go for? Well, it's a do or die, thing for both teams. They might both survive because yeah. they're both 10 points. But for me, I think maybe KP would have that extra push because they were losing, and it's about time that they perform, and it's hurting their ego. Yeah. So I think they might come up winning this game. Okay. All right, so here we are. This is match number 29, the second last game in the league stage. Let's enjoy some cricket. It's KP versus Balochistan.
Welcome to the city of Saints for the match number 29. It's Balochistan taking on Khyber Pakhtunkhwa. Yeah, let's start off with talking about the most important part of the game. That's the pitch. That's how it looks like. Shah Faisal alongside me. He is our pitch master. He'll have a few words to say. This is slightly more compact than the previous one. You see the cracks. They're not as wide open as they were on some of the pitches. More compact, more bounce, little bit of grass. This is not even covering of grass. We see some bare shiny patches and the grass as well, which means they might just have the double pace that the players have been talking about every time we've talked to players. So that's something to look forward to. But other than that, pitches have been great in this tournament. Absolutely, and let's have a look at the two sides. Khyber Pakhtunkhwa making a couple of changes. Maaz Khan, the leg spinner, coming in, and Abbas Afridi, the all-round cricketer, also making his place in that playing 11. On the other side, Balochistan, Bismillah Khan, who's scoring so many runs for second 11, being promoted to first 11. And Khurram Shahzad is also back. The news was that Balochistan has won the toss and they've decided they're going to bowl first. Good toss to win, because at the toss, we're talking to the two skippers, both of them, they wanted to bowl first, so Yasir Shah got his wish. KP has been really rattled with a string of defeats, 4 in a row now. It'll be a huge test of their character. They looked very nervy last night. They're not used to being in this situation. Coach Abdur Rahman was also suggesting that he doesn't know what's hit them, so it'll be interesting to see such a quick turnaround. What effect will it have on them? And Balochistan bowling with KP's brittle batting lineup, they once again will be tested. It's such a huge game, this one. The winner goes at the top of the table and the loser is almost out of the tournament. He will have to wait for the result of a game between Northern and Southern. That is the second game to be played tonight. The two openers, that's Saibzada Farhan and Rehan Afridi, been promoted to open the inning today. He played in the middle order yesterday, but that didn't work out. And it seems like there's been a problem in KP's batting lineup rather than bowling, because they have struggled, especially the top three batters. They have really at the top of the order. Israrullah has got quite a few opportunities. He couldn't come to the party. But this is a brand new combination. Rehan Afridi, the wicketkeeper batter, will replace Haris. Yasir Shah, he was very excited. He was very pumped up. I'm pretty sure that this will be a cracking of a game between two very good sides. This man on your screen, Saibzada Farhan, he's got a job to do. It's very important that they get to a very good start. The average of 29, strike rate 115. He's the key man in this order. Rehan Afridi's contribution will be immense as well. But you feel like Saibzada Farhan and Kamran Ghulam will be the two key men for KP. It's the average of 13, strike rate of 86. Hasn't cracked this format just yet, but we know he's very, very good with red ball cricket. A huge test for him. Junaid Khan, we all know what he is capable of. Those numbers say it all. 198 wickets, that is a remarkable record. Best of 4 for 12, and economy not bad too, 7.5. Well, let's have a look at the umpires. Two very good umpires officiating this game. Shozab Raza, Tariq Rashid, Ahsan Raza is the third umpire for this game, and Iqbal Sheikh is the match referee. Tariq Rashid on your screen as he makes sure that everything is in place, and he says, let the cricket begin. Not comfortable. Just that balance going towards the right from Saibzada Farhan. He fell over a little bit shape in from Junaid. Lucky got the leading edge. He was looking to play it across the line. Junaid will test you because he's very, very skillful new ball bowler.
even at this stage of his career. He is very formidable. Got a slip in. Good to see Bismillah back behind the stumps for Balochistan. Keeping low a little. Not the liking of Sahibzada Farhan. He will get that one. He's off to the mark. It's just so amazing to see the record for Khyber Pakhtunkhwa in this tournament. They were unbeatable in Rawalpindi leg, and in here, in Multan, they've just not won any game. They've struggled big time. They've not got that combination going. They've struggled with batting, with fielding also. That is not what you associate with somebody like KP. The thing though, every time you spoke to Khalid Usman, he said their biggest strength was that they gel together so well. They play for each other. Continue talking about this after this ball. Because they don't have any big name superstars, sometimes in this situation you look up to your big players to put in a performance. But because KP don't have it, they would really have to draw on that strength of playing together and play for each other, because time is running out for them. Yeah, let's have a look at their journey. They won all the games in Rawalpindi, and since the time they'd come to Multan, they've lost 4 games, and that is not a good sign for this big side like KP. You don't usually see this. This is probably the first time in this new system that I'm witnessing this. Well, they're a big side. We can expect anything from them. A comeback. This is a good time. This is an important game. Rehan Afridi is away. 1, 2, 4 runs. That was timed sweetly by Rehan Afridi. But the fielder at final leg was 2 square. First boundary for KP. Junaid just too straight on that occasion. Rehan Afridi just guiding the ball through. KP needs a good start. There's a fielder at mid-wicket, a slip in place for Rehan Afridi. Down the track, it's between the 2 fielders. That is an excellent start by Rehan Afridi. Gave charge, that is a brave start from him. I think the role is clear. Yeah, that's good. He was preempting Junaid, bowling a fuller line to get that movement. That footwork really got him close to the ball. Went through with a shot, aerial but in the gap. This is the kind of start KP need at the top of the order to settle the nerves of the changing room. This is a good move, sending Rehan Afridi up the order. We saw he struggled last evening against Southern Punjab, against spin. Over here, I think he's got that license to thrill. Just go out there, express yourself, show what are you made of. This is a good opportunity. Slip is out. There's a fielder at 45 now. Sharp one. Good comeback delivery by Junaid Khan. End of first over. It's 9 for none. Talking in the previous over about big players in KP. No real superstars, but Sahibzada Farhan and Kamran Ghulam are the 2 men in their batting lineup. They've touched. Sahibzada Farhan has actually played for Pakistan. Kamran Ghulam has been in the squad. It'll be very important for these 2 to contribute today. Ram Shahzad, 27 wickets, average of 27, and their economy ever improving, 8.44. He's making a comeback. He was dropped from the last game. Played Akif, and now Akif is dropped for him.
Off the back foot, punched nicely. That is a good feeling effort by the captain Yasir Shah, but excellent piece of running too. Rihan Afridi was the one coming to the danger end, and he made it quite easily. That's a good start to this game. It's good for KP. Nice punch. Ball came on very nicely. He got on top of the bounce. Yasir Shah's knock took the ball away from him. Both these batters were alert. KP in last night, at one stage, their innings really stalled and they looked nervous. This start will definitely help them. Oh, lucky, and that will run away for 4. Maybe that's the luck Saibzada Farhan was looking for. Nevertheless, he'll take it. First boundary for Saibzada Farhan. Is it any change? Any sign of a change in KP's fortune? Luck has started to run their way. It could easily have gone on to the stumps on another day. KP need that slice of luck. Could it be the turn of fortunes for them? Would desperately hope for it to be. Oh, it's in there. Ball up. Oh, it's dropped it. It was a good effort. It was always going away from him, but at this level, you should be able to take those catches. In a big game, you must take all those catches. And this has been the problem for Balochistan side, the drop chances. Talking about KP's batting woes, Balochistan has had nightmares in the field. And this will remind them of everything that they've done in the field. And a lot of it hasn't been very nice. Skipper Yasir Shah has mentioned their problems. That's a bad start in the field for Balochistan. They do not want to do that again. Or otherwise, they might just pack their bags. Yes, in the air again, away from the fielder. For a moment, I thought that the fielder slipped. Look at Harisuel, he was ready for the catch. So living dangerously, Saibzada Farhan, an inside edge, a catch gone down. This is not where he intended it to play. That leading edge, Khurram Shahzad in his follow through could not quite hang on to it. How costly would this be? Like I said, Saibzada Farhan is key in this batting order. Khurram Shahzad will be disappointed. Today, we won a great game of cricket, and the team that wins need to play better cricket. We don't want to see a team winning because the other team didn't play well. Oh, that will run away for 4. Rihan Afridi catching on the luck. He's just going after every delivery, and luck is on his side too. This will hurt Khurram Shahzad. He has no one else but himself to blame. This time off the glove. 2 streaky boundaries for KP in this over and a drop chance. Luck is rolling for them today. So they've been short of luck in this Multan leg, and we know that a big team like KP, if they're hurt, they're going to come hard at you. And this is what we are witnessing at the moment. Beautiful. Beautiful way to end the over. 2 overs gone, 20 for none. KP off to a good start. KP, this tournament, the 4 defeats has been their worst run since the new format was introduced in 2019. On 3 occasions, they lost 3 games in a row. But this time they went one better, something that they won't be very proud of. But they need to pull things back if they want to stay in this tournament. Off to a reasonably good start. To the leg stump. Lucky, there's a fielder placed for it. Lucky both of them, because it was in the air just for a little while. The fielder is placed just for that shot.
Well, it's just remarkable that KP is such a huge side. The 9 players playing for national side. Imagine if they are back for KP, what side they would be. Huge side. But still, they've managed to win 4 games after all these superstars not there in the team. That shows the character of this team. Good run. Very good run. That is positive cricket. When we call positive, it's about running between the wickets too. Yeah, indeed. There's nothing worse for the bowling side when you're able to pinch a single of a good delivery. That's what Safzada Farhan did, but Rehan Afridi has been a revelation. Look at that. Quick call. Rehan was off the blocks very, very quickly as well. Good communication. That is a positive start for KP. Just need to carry on. Again, a very good run. That is top cricket by KP side. That is marvelous. Once again, Rehan Afridi instigating that single. He exactly knew how softly he's hit it and how far away from Junaid. Look at that. He was never in doubt. Wicketkeepers are very quick between the wickets. Why do you think is that, Ali? I think it's the nature of job. They have to be very fit, very agile, because wicketkeeping is not an easy job. You have to be very quick. Your footwork. Nicely driven. Yeah, talking about positivity, we usually associate positivity with quick runs, big hits. But this KP's start is positive because they're taking singles. They're rotating the strike on regular basis, and that is what the positivity is required in this big game. Yeah, indeed. Beginning of the over, just a couple of deliveries ago, skipper Yasir Shah pointing to his left arm spinner to be ready. There's a chance at non-strikers. They're running for everything. They realize that the runs are not coming that easy, so you got to keep on rotating the strike. Yeah, the fielders in the ring, they need to adjust. They know what's the plan. They're hanging on their heels. Look at that, once again. It's pretty tight. Skipper should have, they need to come in tight and save those singles. It's been a good over. A strike rotation means that both the batters are making Junaid change his line and length. Oh, is there an edge? Is there an edge? Oh. For a moment I thought he has edged it. There was a noise. We'll have a look at it again. 3 overs gone, 23 for none. Was there any noise? Really belated appeal there from Bismillah Khan. Junaid joined him late. Excellent delivery nonetheless. Junaid has bowled a couple of very decent overs up front. None for 23, KP. Yeah, this will be another challenge for the KP batters. Kashif Bhatti, very experienced, very clever, very smart operator. 71 wickets, best of 4 for 14, and economy also very good. 7.63, considering that he bowls mainly in that circle. We have seen him bowl those overs, 4th or 5th over that he usually bowls for Balochistan. Balochistan are looking for their first wicket. We know that this early start, this good start is very important in this big game for both sides. Nicely played. 1. You called it correctly, Ali. Different challenge for these two batters. Remember, like
KP hasn't batted really well, so they wouldn't want to lose wickets. Partnerships are key. Time they lose a couple of wickets in quick succession, they'll bring that pressure back on them. Again, very good running. KP has the highest number of dots, 39%. That means that either they block or they hit, but this is a new approach. They're changing those numbers. They're running well. Two new partners, but still they've done a good job. That is hit beautifully. That is what Sahibzada Farhan was searching for. He judged that length quickly and rocketed onto the back foot and played it over that boundary line. We'll have to wait for the umpire's decision. Did that hurt the skirting? That's the question. But he got away on the first delivery of the over. This hit the skirting on the full. So that will be a maximum. Sahibzada Farhan really picking up the length quickly. It was short and it sat up. This is now turning into a very good start. There you go, confirmation. Got to be very careful, Balochistan side. Oh, there's an appeal. Now says umpire. Shows that Raza is a very good umpire. Hardly gets them wrong. Today there's no time for complacency for the batters. Sahibzada Farhan, lazy stroke. That's gone in between the fielders. That is an excellent start by Sahibzada Farhan. Beautifully played. Indifferent from Khyber Pakhtunkhwa. Wide, too full in the arc for Sahibzada Farhan. He only had to beat that fielder in the ring inside the power play. Great execution. Very sensible way to end the over. They got enough runs. It's a very good start for KP. 4 overs gone, 36 for none. Big change hoga boys. After 4 overs, 1 over down. After 4 overs, 1 over down. जुनैद खान के 2 अच्छे ओवर्स के बाद उनको हटा लिया गया है। अम्माद बट को अब गेंद सौंपी गई है वकार यूनुस एंड से। खैबर पख्तूनख्वा की लगता है कि उनकी बैटिंग की आंख आज खुल गई है। 4 ओवर्स में 36 रन बना लिए हैं 9 के औसत से और साहबजादा फरहान को इस अरसे में एक नई जिंदगी भी मिली। इसलिए अभी तक सूरत हाल खासी खुशकुन है खैबर पख्तूनख्वा के लिए इस डू एंड डाई मैच में। ऑन द ऑफ खेलना चाहते थे, फील्डर को पीछे पाया हारिस सुहेल को और 1 रन हासिल कर लिया। इससे अच्छी इब्तिदा हो नहीं सकती थी खैबर के लिए विकेट गंवाए बगैर, खासतौर पर एक नए ओपनर के साथ मरीना। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा ने ये बहुत जल्दी रियलाइज़ किया कि बड़ी शॉट्स नहीं लग रही, तो इन्होंने अपना प्लान चेंज किया जो पहले पिछले मैचेस में नज़र नहीं आ रहा था। स्ट्राइक रोटेशन पे बहुत ध्यान दिया इन्होंने और उसी में इनको एक आधी ऐसी गेंद मिल जाती थी जिसमें इन्होंने बाउंड्री हासिल की। ये बहुत अच्छा, एक अच्छी हिकमत अमली है क्योंकि ये चीज़ मिस कर रहे थे केपी। ऐसे उठाकर खेला और लॉन्ग लेग बाउंड्री का इलाका बिल्कुल खाली है। रेहान आफरीदी ने आज कई शॉट्स खेले हैं लेग साइड में स्क्वायर के पीछे और 4 रन पाए हैं, ये उन्हीं में से एक था।
मिड विकेट मारना चाह रहे थे लेकिन ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन जो नतीजा हासिल करना चाह रहे थे वो उन्हें मिल गया। ये अच्छा शफल करते हैं, ऑफ स्टंप पे आ जाते हैं और फिर ये गेंद भी कतरे सीधी थी जिसकी वजह से बासानी ये शॉट खेलने में कामयाब हुए। तो अब तक रीड कर लेना चाहिए यासिर शाह को, और अगर आप फाइन लेग को पीछे नहीं हटाना चाहते तो फिर जो स्क्वायर लेग के फील्डर हैं उनको बैकवर्ड खड़ा कर दीजिए, क्योंकि ये विकेटों की लाइन से भी गेम को फ्लिक करने में कामयाब हो जाते हैं रेहान अफरीदी। अब तक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 4 चौके लगा चुके हैं। विकेट कीपर बैट्समैनों से इन दिनों ये एक फैशन हो गया है ओपनिंग कराना T20 क्रिकेट में। इससे पहले मोहम्मद हारिस ओपनिंग कर रहे थे और हमने देखा कि जो मोहम्मद अखलाक हैं वो सेंट्रल पंजाब के लिए ओपनिंग कर रहे थे। किंगडम वैली ये ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप जाइए इसके और इनामात जीतने का मौका पाइए। नेशनल T20 कप के ये टाइटल स्पॉन्सर हैं किंगडम वैली। अच्छी क्रिकेट, स्ट्राइक का रोटेट होना भी बहुत जरूरी है ताकि बॉलर को आपके खिलाफ ज्यादा तजुर्बात करने का मौका न मिले। ये 2 फील्ड ऑफिशियल हैं, तारिक रशीद और उनके साथ मौजूद हैं शोजिब रजा, जो कि इंटरनेशनल मैचों में भी अंपायरिंग कर चुके हैं। शोजिब स्क्वायर लेग पर हैं। अरसलान रजा टीवी अंपायर हैं और इकबाल शेख जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, मैच रेफरी इस मुकाबले के। आमतौर पर T20 में मरीना जो कोचेज होते हैं कहा जाता है कि उनको 2 ओवर्स के बाद समझ लग जाती है कि इस पिच का रवैया क्या होने वाला है, आगे खेल किस तरफ जा सकता है। तो आपने तकरीबन 5 ओवर्स देख लिए हैं, आपको क्या लगता है यकतरफा है बैटिंग के हक में? नहीं, एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि बासानी शॉट्स नहीं लग पा रही और ये अभी हम मुल्तान में देखते आए हैं। इसमें थोड़ा सा लो बाउंस भी है, कुछ गेंद हमने देखी थोड़ा लो बाउंस में रहा है और बड़ी शॉट्स नहीं लग पा रही, इसीलिए केपी ने बहुत जल्दी एडजस्ट किया, सिंगल डबल्स पे ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने। अच्छा लग रहा है अरसलान रजा को मुस्कुराते हुए देखकर। या पाकिस्तान के टेस्ट अंपायर्स में शुमार किए जाते हैं, दुनिया में भी अब इनको नामवरी मिल रही है। अभी ये वर्ल्ड कप कवर करने के लिए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा फाइट बैक किया इस ओवर में अहमद भट्ट ने, शुरू में बाउंड्री कंसीड करने के बाद 44 किसी नुकसान के बगैर। मार के कर उसमें खुद या तो निकल जाता है या रुक जाता है, डबल टेस्ट से आते जो छोड़ के कर वो काम है ही नहीं। और ये बम्पर सीजन पाकिस्तान क्रिकेट का शुरू हुआ है। इंग्लैंड की टीम कराची पहुंच गई है। 20 सितंबर को पहला मार्का उससे दरपेश होगा पाकिस्तान से नेशनल स्टेडियम में। और जो 7 में से जो पहला T20 इंटरनेशनल है इसके टिकट्स दस्तयाब हैं और पहले दिन के जो टिकट्स की आमदनी होगी। और ये अच्छा पुल शॉट, 4 रन्स, कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। गेंद रेहान के पाले में थी और शॉर्ट गेंद को किसी तरह की मुश्किल के बगैर उनने दे मारा स्कोर के पीछे। खुरम शहजाद आज वापस आए हैं इस प्लेइंग 11 में और ये लेंथ अगर आप किसी भी पेस पे करें इस विकेट पे तो बासानी बल्लेबाज इसको खेल पाते हैं। रेहान अफरीदी क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा इनका ध्यान होता है कि लेग साइड पे शॉट्स खेले जाएं, ये आसानी से इन्होंने पुल किया और लाइन भी थोड़ी सी मिडल पे थी जिसकी वजह से और आसान हो गया काम। खुरम शहजाद जब आगे गेंद करते हैं तब ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जी हाँ, और ये सर्स के बॉलर हैं कि इनके सामने
बैट्समैन को अपने पैड्स बड़े लगते हैं, इतनी ज़्यादा रफ्तार है नहीं और ऐसे में शॉट गेंद करना नामुनासिब सा लगता है। लेकिन ये जो पहले दिन के टिकट्स की जो आमदन है ये सैलाब ज़दगान को मिलेगी, इसलिए आप भी इसमें हाथ बटाइए और आप देख सकते हैं PCB.bookme.pk, यहाँ से आप अपने टिकट्स जो हैं ये बुक कर सकते हैं। PCB.bookme.com पर जाइए और अपना टिकट जो है अभी खरीद लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका मिलेगा नहीं। ये जॉर्ज बटलर की टीम आई है और इस वक्त एक से बढ़कर एक इंग्लिश क्रिकेटर जो है आपको एक्शन में देखने को मिलेगा। कराची और लाहौर में 17 बरस के बाद आई है इंग्लैंड की टीम। पाकिस्तान और इंग्लैंड का हमेशा जो क्रिकेट मैच होता है ख़ास नौइयत का होता है, एक ख़ास ही इसमें दिलचस्पी का आलम होता है। ये 1954 में ओवल के दिनों से ही ये एक राइवलरी चलती आ रही है। दो T20 की बहुत अच्छी साइड्स हैं और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। हम जैसे जिन्होंने पहले कभी इंग्लैंड को खेलते नहीं देखा यहाँ, उनके लिए बहुत बड़ा ये मौका है जाके इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान की सरजमीन पर देखें। उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद से दूर रह गए। अच्छी बॉलिंग खुर्रम की, क्योंकि पावर प्ले की अब चंद गेंदें बाकी हैं, इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कल भी एक हाथ जो है ये इनका बॉटम हैंड जो है वो हट गया था बल्ले के हैंडल से और यही तकरीबन शॉट खेलते हुए साहबजादा फरहान आउट हो गए थे। कभी जब ये ज़्यादा ज़ोर से मारने जाते हैं तब कंट्रोल खो देते हैं और लास्ट मोमेंट पे जब इन्हें लगता है कि शॉट से दस्तबरदार हों तो फिर ये एक वन हैंडेड ग्रिप रह जाती है नॉर्मली बॉटम हैंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 6 ओवर्स और 50 रन खैबर पख्तूनख्वा के मुकम्मल हुए साहबजादा फरहान के इस सिंगल के साथ। बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा देखने में आया आज रेहान अफरीदी की जानिब से। साहबजादा फरहान एट टाइम्स खुशकिस्मत रहे, उनका कैच भी गिराया। खुर्रम शहजाद ये गलती कर बैठे, उसके बाद फुल शॉट लगाया, स्पिनर की खासी पिटाई की काशिफ भट्टी की पहले ओवर में। यासिर शाह ये खुद आ गए अब बॉलिंग के महाज पर। ये भी एक ऐसे बॉलर हैं जिनके सामने बैट्समैन को अपने पैड्स बड़े लगते हैं। काफी सक्सेसफुल बॉलर हैं यासिर शाह, 4 विकेटें हासिल की 7 रन देके। अभी तक केपी का ये सेकंड बेस्ट पावर प्ले रहा है। पहला बलूचिस्तान के खिलाफ ही 54 पे एक खिलाड़ी आउट था 6 ओवरों में, अभी 50 पे कोई नुकसान नहीं उठाया। यही फाउंडेशन जो है वो मिसिंग थी खैबर पख्तूनख्वा के साथ, अब यहाँ पे कैपिटलाइज करना जरूरी है। यासिर शायद यहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी कि गेंद को स्टंप्स की तरफ मारा जाए तो डिफ्लेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकअप कर रहे हैं। रेहान अफरीदी जो है अपनी क्रीज से ये पहले ही आगे निकले होते हैं, काफ़ी एक्टिव रहे हैं क्रीज पर रेहान अफरीदी। बहुत आला यासिर भाई, बहुत आला, बहुत आला। आजा काशी जल्दी बॉय शाबाश। यासिर शाह अच्छा मिक्सअप करते हैं, रफ्तार में भी रद्दोबदल अच्छा है इनका। जहाँ पे
पिच करते हैं बॉल विद इन स्टंप्स रखने की कोशिश इनकी होती है, इसलिए क्राफ्ट करना पड़ता है बैटर को शॉट। मिड ऑन पर काशिफ भट्टी खासा पीछे थे और बिस्मिल्लाह खान वापस आए इस टीम में, जो विकेट कीपर है इस वक्त हेलमेट के नीचे। अच्छा लग रहा है इनकी भी आवाज सुनकर। अभी ये फैसलाबाद में थे जहां पर सेकंड 11 के मैचेस हो रहे थे, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे और यहाँ पर कोशिश की थी लेकिन शायद गेंद जो है वो जमीन से लगती हुई गई थी यासिर की जानिब। जरूर अच्छी थी लेकिन इस एंगल से पता नहीं चल पा रहा कि बम्प बॉल था। ये गेंद जो है वो पहले गिर गई थी यासिर शेम से उठाकर खेला, लेकिन फिर पूरी तरह पिच पर नहीं थे। ये दरअसल गेंद बल्ले से टकराई थी, हवा में थी और यासिर के सामने गिर गई। ठीक है यासिर भाई, डेर का बॉय है। अच्छा और क्या है, अब तक यासिर ने खामोश रखा है दोनों खिलाड़ियों को, जो कि अब ग्राउंड शॉट्स खेल रहे हैं। पावर प्ले खत्म होने के बाद 7 ओवर्स मुकम्मल होने पर केपी ने बनाया 55। दोनों ओपनर्स की शराकत 55 रन की है इस वक्त 7 ओवरों में। काफ़ी बैटिंग है, कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी पिछली रात को। सरबर अफरीदी, आदिल अमीन, आमिर अजमत, खालिद उस्मान, बैटिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे एक अच्छे टोटल पे पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए फाउंडेशन मिल गई। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सलेट करना पड़ेगा, एक ओवर में एक बाउंड्री लाजमी लगानी पड़ेगी और स्ट्राइक रोटेशन पे जैसे अभी इनसार किया हुआ केपी ने उसको कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। और इसीलिए पिछले ओवर में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा खतरा मोल लेने से गुरेज किया दोनों बैट्समैनों ने यासिर शाह के सामने, लेकिन शायद काशिफ भट्टी वो बॉलर होंगे जो इनकी हिट लिस्ट पर रहेंगे। बैटिंग दरअसल एक खैबर पख्तूनख्वा की जो है नींदें उड़ाई हैं इनके सपोर्टर्स की बैटिंग ने यहाँ मुल्तान पहुँचने के बाद। इस बार बढ़ चढ़ कर खेला, शानदार शॉट, गेंद फ्लैट गई साइड स्क्रीन के सामने, आला छक्का साहबजादा का। पहली गेंद पे अच्छा अटैक किया, रीड किया था, हल्की सी एयर जरूर दी थी लेकिन अच्छा कदमों का इस्तेमाल, पिच ऑफ द डिलीवरी पहुंचे और बासानी सीधा खेल दिया थ्रू द लाइन। ये टारगेट जरूर करेंगे जैसे आपने कहा काशिफ भट्टी को, लेकिन यहाँ पे कैरिड अवे नहीं होना। कोई बात नहीं काशिफ भाई, कोई बात नहीं, शाबाश। इस पिच में ज्यादा टर्न नहीं है, इसलिए आपको अपनी फ्लाइट और रफ्तार में रद्दोबदल करना जरूरी हो जाता है। ये बेहतर गेंद थी, गेंद को दूर गिराया और इस बार गेंद को हवा भी दी काशिफ भट्टी ने। अगर आप तेज करने के लिए जाएंगे तो फिर परेशानी होगी। यासिर शाह को टारगेट करना आसान नहीं क्योंकि वो एक अच्छे क्विक एक्शन से आते हैं, गेंद भी उनका थोड़ा स्किड करता है और विद इन विकेट्स रहते हैं, थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं काशिफ भट्टी क्योंकि एंगल से इनका गेंद एक ही जगह आता है। फिर दूर से खेलने पर मजबूर किया काशिफ भट्टी, बड़े पुराने बॉलर हैं और जान गए हैं कि यहाँ पर फ्लाइट देना है तो गेंद को दूर रखना है बैट्समैन के पाले से। आज हसीबुल्लाह विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, उनकी जगह पर बिस्मिल्लाह खान की आवाजें सुनने को मिल रही। बिस्मिल्लाह का एक अच्छा इंक्लूजन हुआ है, शान मसूद की जाहिर है कमी बहुत महसूस होगी बलूचिस्तान को, लेकिन इनका रोल भी अहम रहेगा। और बड़ा उम्दा शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब, ये 4 या 6, शायद टीवी अंपायर की मदद ली जाए लेकिन हाथ खोलने का मौका मिला। रेहान पहले से ही अपनी आस्तीनें चढ़ाए हुए हैं आज और बड़ी खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, बड़ा उम्दा क्रिकेटिंग शॉट था।
थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गए थे यहाँ काशिफ भट्टी। आउटसाइड ऑफ स्टंप ही गेंदे कराए जा रहे थे और इस पर रेहान अफरीदी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इनसाइड आउट शॉट खेलना आसान नहीं होती, बहुत कंट्रोल हासिल था। 38 पे बगैर किसी नुकसान के केपी। चौके पर ये 8वें ओवर का इख्तिताम हुआ। 32 पर रेहान है, साहबजादा फरहान, ये दोनों बैट्समैन जो हैं एक दूसरे को खुद से आगे नहीं निकलने दे रहे। यासिर भाई बहुत आला शाबाश। बहुत आला यासिर भाई, बहुत आला। शाबाश बॉयज, शाबाश बॉयज। हाँ आजा 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 आजा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत आला। शाबाश शाबाश, बहुत आला शाजी। आजा उधर चला जा, बाहर हो जा। सिर्फ पानी से आजा। 69 without a loss in the 9th over. He left Israrullah out today. Rehan is up in the order with Sahibzada Farhan. Quick 2 runs, pushing the ball in the gaps. They've probably had a brief or a long meeting, KP. Probably the first 3 words would have been enough is enough. And some results are coming in. I think spend time out there, runs do come. Yesterday they were in a hurry. Catch it is a call, should be out, and it's taken by Kashif Bhatti. Finally, the captain strikes Yasir Shah, and they've broken the partnership. Rehan Afridi walks. Yeah, searching for big runs. Rehan Afridi. Yasir Shah is very experienced. They were going all right, and then this happened. Just wanted to go over that fielder, and luckily they didn't drop this one. So they broke on the partnership. Rehan Afridi goes. It's 71 for 1. An ideal player to have at this number, Kamran Ghulam. The stage is set for him, and these conditions will suit him. Yeah, Kamran Ghulam. The stage is set for him. He's sort of a player that will like batting here because they've got the runs, 71. The momentum is with them. All you need is just stay there. Look at that average also, very impressive, 898. The strike rate also very good, best of 110. 71 for 1. Off the mark straight away. Kamran Ghulam with a single. Rehan Afridi, the pressure of the board, he had to go big. This is a big game. You need good total on the board, and in searching so that he lost his wicket. Yasir Shah very happy. Ayyo! 73 for 1.
Khyber 13 and over. Surprised that Bismillah Khan has been given the gloves. Hasibullah, I won't call it. Who wants to give rest to anyone? Has more experience, yes. Bismillah Khan. I would have probably done the same, but it's just a bit surprising. I think Hasibullah would get a bit of rest as he opens, but so does Bismillah. Interesting to see who will open. He's had a good knock in the second 11, Bismillah Khan, as he's earned a call-up after Shan Masood left. In the second 11, scored a 93 not out of 43 with 11 boundaries and 5 sixes versus Sin. Wicket falls, so you get a bowler who's been under the pump. He's given 23 in 2 overs, so probably this is the time. But Farhan would like to take advantage of that if he gets the strike. And coming back for 2. Big boundary, square of the wicket. Now talking about the batting order, in my opinion, Bismillah should open, because he's somebody who's been scoring runs for second 11, and that will provide them that opportunity to get that early good start. That is a good start, good comeback rather, I would say, for Khyber, who's given away a lot of runs in the first 2. It's a good fielding effort too. They need it. They need to be spot on. Yasir Shah making sure that he just calms the nerves. This is a big game. If you lose this one, you're nearly out of the tournament. You don't want to be doing that. You played so well all around this tournament. This looks like a much better track than yesterday in terms of batting. The results are showing here. Bowling it away from the batter. That's probably he's realized he's making him play over that offside, and he's got that extra cover wide. The pitch you were talking about, it looks like a belter. Nicely rolled. There are a few cracks, some scattered grass also on the side, but that won't matter much. We're halfway through. 10 overs gone, 78 for 1. You look at KP's batting throughout the tournament, they have least amount of 50s in the tournament, individual 50s, only 3. But I'll tell you why. Because KP doesn't rely on any 1 or 2 batters in particular to do all the runs. Their batters have been scoring 19s, 20s, 25s, 30s and contributing. The 350s have come from Sahib Zada and 2 from Kamran Ghulam. These are the 2 mainstay, but they don't expect them to do all the 150, 60 runs. Whereas you see Balochistan has got maximum number. In fact, CP has got maximum number 11. But I'm pretty sure they're only by two batters. One of them will be Tayyib Tahir, Shoaib Malik. And that is mainly because the top 3 batters have scored runs for these teams. Should be out. Should be out. Oh, he's dropped it again. You do not expect this from somebody like Ahmad Bhatt. He's such a safe fielder. He just made a mess of it. He's disappointed. Yes, rightly so. He's a good fielder. But these days, I don't know what's wrong.
if you're wearing Balochistan kit, you're not catching. Look at his, he's not even in position. He doesn't know where the rope is, and he's a good fielder, Ahmad, but that's really not good. What can he do more? He's just very frustrated with this whole scenario of the fielding efforts throughout. And the shot that was played is very similar to what Amir Azmat played yesterday. Inside out, too much in the air, not distance on it. He was clearly gone. And this is what these two spinners are doing. They're making him play outside the off stump. They're making him play that shot. What he attempted, right? And the catch was dropped. In the previous over, Kashif Bhatti was bowling him outside the off stump, making him fetch the ball from there. And when your best fielder doesn't catch, it's not a good news. There's something wrong in the camp. Boy. 11 gone, 85 for 1. Yeah, let's have a look at this graph. Top three batters, they've struggled in Multan big time. No 50s as per this graph. But the average has gone down from Rawalpindi, 19 just. The strike rate also. Whereas CP's batters have really come to the party when they've come to Multan. That's why they're at the top of that runs lead. There has been the struggle for KP. And that is why they've lost the games in Multan. 4 in a row. That's the main reason. The top order hasn't clicked. Hussain Talat, lots of experience there. He's been a very promising cricketer all round. Got the cap, Pakistan colour. Because lately he's just not been himself in terms of the performances that I expected. And you do get that lazy patch at times. It doesn't mean that he's not trying hard. He's someone who is probably your answer for the middle order. I'm talking about the bat and someone who can bowl a bit. A very handy cricketer. But somehow I have a feeling that he didn't focus enough much on bowling. He's a much better bowler than he thinks he is. The inclusion of Bismillah Khan is something which is really, I'm happy for seeing him. I saw his name, really thought that should have been there from the beginning in the first 11. The idol is Rashid Latif. Watching him, wanted to be a wicket keeper. One of the first players who tested positive. I remember we were, long ago, it was 2 years ago, when we were doing, I think, the trophy. He's a good fighter, good bat, the top. You always see wicket keepers nowadays. Got to be top order bats, top 3. Rizwan, Gilchrist, Sangakkara, Kamran Akmal.
I think because Balochistan has been such a huge side, full of superstars, they've got a huge batting lineup, and to fit in Bismillah, and that's what Kamran Ghulam did against Southern Punjab. Excellent, excellent football. That pickup shot, probably the best one he's played. Another one towards leg side. He's been in tremendous touch, and he's been the lone warrior in this batting lineup of KP. That last shot over point, my word, that went flat. I could never imagine 10 years ago someone hitting a 6 over point. Good stop there. And they're coming back for the second. Went quickly. Good effort. Half stop though. But still, considering the type of fielding Balochistan is doing, this is a good effort. Now we're talking about Bismillah Khan. Because Hasibullah is a youngster, a wicketkeeper batter, so they've gave him opportunity up the order. And that's the problem, that Bismillah is also an opener, a wicketkeeper batter who opens the inning. And now, with Shan Masood going for national duties, there was room available. Although they've dropped Asad Shafiq, that's a big one. But still they would go with Bismillah Khan because they need quick runs up the order. And he will, in my opinion, will give that. A slower one. Yeah, you were talking about Hasibullah. Yeah. He must be feeling so left out. He's standing at long on at the moment. When you're so used to seeing the action from so close up front as a keeper, that's a slow ball. Suddenly you end up standing at long on, you feel that you've been punished or something. You're like so far away. There's no one to talk to. Sometimes keepers just start talking to the batters. They need company. They're used to company. And because they always have something or the other going on. That's a boundary. $12 gone. 92 for 1. आने वाले में अभी आदिल अमीन है और उसके बाद दो इनके पास पावर हिटर हैं, आमिर अजमत और सरवर आफरीदी। बहुत ही अच्छी हालत में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा इस उम्दा इब्तिदा के बाद ओपनिंग पार्टनरशिप में 71 रन बने। रेहान अफरीदी बहुत अच्छा खेलकर आउट हुए, हेड स्टार्ट दिया उन्होंने अपनी टीम को। पिछला ओवर जो है हुसैन तलत का, ये अच्छा चल रहा था, लेकिन आखिरी गेंद उन्होंने शॉट गिरा दी और स्लो ज़रूर थी, इससे खासा वक्त मिल गया कट करने का। और स्कोर कट तो हमेशा ही बहुत शौक से खेलते हैं कामरान गुलाम। आगाज की जरूरत थी खैबर पख्तूनख्वा को। काफी मायूस कुन कारकर्दगी थी उनकी बैटिंग में कल शाम को। अब अच्छा प्लेटफॉर्म सेट है उनके पास, 8 ओवर्स का खेल बचा है। हारिस सोहेल आए हैं गेंद करने के लिए। इनकी सिर्फ 9 ही विकेटें हैं। ये जब से नया
सिस्टम मुतारिफ हुआ। ये दरअसल वो रिकॉर्ड है आरएस सोहेल का, हालांकि इससे ज़्यादा इनकी विकेटें हैं T20 में। ये सियालकोट स्टैलियंस के दिनों से खेलते आ रहे हैं T20 सर्किट में, और इनको हमेशा से कमतर बॉलर ख्याल किया जाता है और कम इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये बहुत बासलाहियत है, बॉलिंग में भी अच्छा एक्शन है, विकेटें ले जाते हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर इनको समझा जाता है। एक बैट्समैन की मेंटालिटी है इनकी, इनको पता है कि कहां पे बॉल करने हैं जो बैट्समैन को मुश्किल पेश करें। पाकिस्तान के करियर में भी काफी ब्रेक थ्रूज लिए उन्होंने। और बाहर निकल कर खेला, ये बुलंद वाला छक्का और गेंद आर पार हो गई मैदान के। निस सेंचुरी का संगे मील भी उबूर किया साहबजादा फरहान ने, जिनने आज बड़ी दिलजमी के साथ बैटिंग की है। ज्यादा बड़े नाम मौजूद नहीं है, इसलिए साहबजादा फरहान पर जिम्मेदारी थी और आज इस पर पूरे उतरे। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल गेंद की पिच पर जा पहुंचे, इसीलिए बहुत ही बड़ा छक्का लगाने में कामयाब हुए। यहाँ पर दूसरा रन बनाने का मौका है, लेकिन कामरान गुलाम जो हैं उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी वापस मुड़ने में। हारिस जो हैं शायद वो काशिफ भट्टी से हिंट ले सकते हैं, जिस तरह उन्होंने अपना आखिरी ओवर किया था, गेंद को दूर दूर गिरा रहे थे। जितना आप बैट्समैन के करीब गेंद को गिराएंगे शॉट लगने का इस पिच पर, उतना ही ज्यादा इम्कान है। बिल्कुल, और क्या कामरान गुलाम ये चाह रहे थे कि वही हारिस सोहेल का सामना करें, इसलिए दूसरे रन के लिए ज्यादा उन्होंने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं कामरान गुलाम भी। कवर का फील्डर है, वो एक्स्ट्रा कवर की जानिब है, बिहाइंड स्क्वायर और रेगुलेशन कवर, कोई स्वीपर नहीं है। अच्छा फुटवर्क, साहबजादा फरहान दोबारा दूसरा रन लेने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कामरान गुलाम जो हैं वो आज ज्यादा दौड़ने के मूड में नहीं है। 100 रन खैबर पख्तूनख्वा ने यहाँ अपने मुकम्मल किए। ये देखिए क्रीज के बाहर आए, फिर इनसाइड आउट खेला, बिल्कुल गेंद की लेंथ के मुताबिक। अच्छा लग रहा है ये देखकर कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बैट्समैन हैं कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं स्पिनर के सामने। स्वीप शॉट ये पहले ही बहुत अच्छा खेलते हैं। 101, एक खिलाड़ी आउट। कल बैटिंग बुरी तरह नाकाम हुई थी खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन जो बीत गई सो बात गई। साहबजादा फरहान ने आज एक नया दिन है और उनने दिखाया है इस नई इनिंग्स में कि कितने ज्यादा उनके पास स्ट्रोक्स हैं, जवाब है उनके पास पेस और स्पिन दोनों का। ज्यादातर स्पिन को आड़े हाथों लिया। ये शानदार छक्का। कल के मैच में स्पिन के आगे बहुत बुरी तरह केपी की बैटिंग लाइनअप फंस गई थी, खासतौर पर अली माजिद के सामने बिल्कुल उन्हें, और हसन खान के भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, लेकिन आज बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए। यहाँ आपको क्रेडिट रेहान अफरीदी को भी जरूर देना होगा, जो अर्ली प्रेशर था, जो नर्व्स थे, उसको ईज किया उनकी प्रोएक्टिव बैटिंग ने, और जब वो स्टार्ट मिल गया तो फिर उसके बाद कदम जमाने का मौका मिल गया साहबजादा फरहान को भी। जहाँ क्योंकि हमेशा मुश्किल हो जाता है अगर आप एक रात पहले पूरी तरह मैच हारे हों और अगले दिन आपको एक ऐसा मुकाबला मैदान में उतरना पड़े जहाँ डू एंड डाई किसी सूरत हो। डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2022 के मुकाबले 1 अक्टूबर से ये मुत्तहदा अरब इमारात में शुरू हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की टीम भी हिस्सा लेगी। ये ज्यादा कुव्वत वाला शॉट नहीं है, सिर्फ क्लियर करने की कोशिश की, पूरी तरह इख्तियार में नहीं थे साहबजादा फरहान, लेकिन आज उनका दिन है
2 कैचेस पहले ही गिर चुके हैं और ये गेंद फील्डर की पहुंच से बाहर थी। कैलकुलेटेड रिस्क लिया क्योंकि मिड ऑफ का फील्डर ऊपर था, बॉल बिल्कुल भी उनके पाले में नहीं थी, लेकिन खेल गए अपने शॉट को और इसी वजह से वो मिड ऑफ के फील्डर को पार करने में कामयाब हुए। किस्मत भी यकीनन आज उनके साथ है, इसमें कोई शुबा नहीं। शुरू में 2 बाउंड्रीज उन्हें खुरम शहजाद के खिलाफ भी मिली, इनसाइड एज पर और टॉप एज पर कीपर के सर के ऊपर से। अच्छा पुल शॉट, लेकिन इसीलिए फील्डर रखा गया है बिल्कुल बाउंड्री पर। ये पिछले बरस जो हैं ये पीसीबी के डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर थे साहबजादा फरहान, और इस साल भी इन्होंने अच्छा आगाज किया है सीजन का। ये देखिए ऑन द ऑफ इन्होंने चिप कर दिया, लेकिन अक्सर देखा गया कि इनका जो निचला हाथ है वो हैंडल से अलग हो जाता है शॉट्स खेलते हुए, खास तौर पर जब ये थोड़ा सा दूर से शॉट खेलने के लिए जाते हैं। ओह ये अच्छी आवाज आई है और गेंद भी क्लियर कर गई आसानी के साथ मिड विकेट का इलाका। ये बड़ा छक्का छोटे कद के कामरान गुलाम का। अपना टाइम लिया आज कामरान गुलाम ने और लेंथ बॉल थी, स्लो डिलीवरी थी ऑफ कटर, इसको पहले से ही भांप लिया उन्होंने। काफी सॉलिड इनके 4 आर्म्स हैं और काफी जोरदार स्ट्रोक था। जब लेंथ ऐसी हो तो यहां पे बॉलर का बचना बहुत मुश्किल है अमाद भट्ट की पेस पर। 41 रन इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलजुल कर बना लिए हैं। कामरान गुलाम इसमें बराबर के शरीक हैं 18 रन के साथ। ये गेंद रुक जाती है कई बार जब ये घास पर नहीं लगती है, क्योंकि ये जो घास के पैचेस हैं वहां पर अगर ये लगती है तो गेंद ज्यादा तेज आती है ऑफ द विकेट, और जब ये घास के अलावा पिच पर दूसरी जगह पर साफ जगहों पर गिरती तो कई बार रुकती है। चीज विकेट का कैरेक्टर ऐसा ही है, क्योंकि जो घास है वो बिल्कुल हमवार घास नहीं है, जगह जगह पर है और वहां पे बॉल का बिहेवियर चेंज होता है। ये ऐसी विकेट है बैट्समैन को आंखें खुली रखनी होंगी इस विकेट पर। ऐसा भी नहीं है कि रन नहीं बन सकते, लेकिन आप बिल्कुल जिस तरह कहते हैं कि बॉलर्स बैटर्स पैराडाइज नहीं है। एक मतलब फिर जो है इनका बॉटम हैंड से हाथ तकरीबन हटने को था साहबजादा फरहान को, और ये भी मुमकिन है। इसकी एक जो मुमकिन वजह है वो हो सकती है क्योंकि कई बैट्समैन जो बॉटम हैंड से ज़्यादा खेलने के आदी होते हैं उनको प्रैक्टिस कराते हैं कोचेस कि आपने निचले हाथ का बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना और आपका जो अगला हाथ है वही चलना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से भी आपको आदत नहीं रहती निचले हाथ के इस्तेमाल की। हमेशा कोचेस आपको यही सिखाते हैं कि निचला हाथ जो है आपका बहुत ही कमज़ोर उसकी ग्रिप होनी चाहिए बैट पर, टॉप हैंड जो है उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। बड़ी तेजी के साथ स्ट्राइक में रद्दोबदल किया कामरान गुलाम ने, जो अच्छे स्ट्राइक रेट पर खेल रहे हैं। 146 का है, 115 पर 1। आप देख सकते हैं आज ये तमाम मनाजिर हैं ये मुल्तान की धूप में लरसते हुए नजर आ रहे हैं, और यही आलम इस वक्त बलोचिस्तान की बॉलिंग का भी है। सिर्फ यासिर शाह एक विकेट ले सके, उनने अच्छा स्पेल किया। अम्माद भट्ट महंगे रहे हैं, काशिफ भट्टी भी आज ज़्यादा कारगर नहीं रहे। हुसैन तलत और हारिस सुहेल से जो 2-2 ओवर्स कराए गए उसमें भी 16 रन बने। यासिर शाह अपना स्पेल समेटने के लिए आ गए हैं।
पिछले ओवर में जो विकेट की बात कर रहे थे, इस टूर्नामेंट में जो विकेट्स हैं वो ऐसी रही हैं कि जिन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट को प्रोड्यूस किया है। जैसे मैंने कहा, बिल्कुल ये बैटर्स की पैराडाइज नहीं है कि 200 पे 200 बने। 170, 180 पर, 160 पर अच्छे मैचेस हुए। बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ हमेशा मौजूद रहा है, जिससे मुकाबले की फजा बरकरार रही है। और हमने लास्ट बॉल की फिनिशेस भी देखी, 1 रन, 2 रन, 3 रन के मार्जिन से फतह और शिकस्त देखी गई। बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है ये। यार यहाँ ये कोशिश होनी चाहिए इन दोनों खिलाड़ियों की कि अभी 9 विकेटें बाकी हैं और इनिंग्स में 33 गेंदें बाकी हैं कि स्कोर को 200 के करीब ले जाया जाए। 190, 185 तक। इतनी ज्यादा बैटिंग है और गहराई है इस बैटिंग लाइनअप में। अफरीदी धुआंधार इनिंग्स खेल सकते हैं। यहाँ धुआंधार शॉट खेलने के लिए गए थे साहबजादा फरहान, लेकिन यासिर शाह ने उनका पीछा किया। अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ड्रिफ्ट और टर्न मिली। दूर से बिस्मिल्लाह को बॉल लाना पड़ा। थोड़ी देर के लिए बल्ला हवा में जरूर था फरहान का, लेकिन तारिक जो आप 200 की बात कर रहे हैं वो जरूर ऐसा लगता है कि स्कोर लाइन को देखते हुए ये बिल्कुल आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में मुमकिन है। लेकिन जो विकेट के बारे में जो मैं बता रहा था, इतने ज्यादा खुले रन, इतनी खुली शॉटें लग नहीं सकती। बॉलिंग टीम के लिए जरूर कुछ ना कुछ मौका मौजूद रहता है। उठाकर खेला और फील्डर देखते रह जाएंगे। लाजवाब छक्का, साहबजादा फरहान क्रीज के बाहर आए और राउंड कर रख दिया। कहीं से भी वो बॉल के करीब भी नहीं थे, लेकिन अपना शॉट खेल गए। इस मर्तबा दोनों हाथों की कुव्वत इस्तेमाल की, लेकिन बहुत सॉलिड बेस था। देखिए फुटवर्क, और जल्द ही शॉट की एक्सिक्यूशन तक गए और शानदार तरीके से बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला। फिर लंबा हाथ मारा है काशिफ भट्टी, हर वक्त गए और रोकने में कामयाब हुए। इस बार क्योंकि ज्यादा दूर से खेलने चले गए थे, इसलिए पूरी तरह इख्तियार में नहीं थे साहबजादा फरहान, जो अब सेंचुरी बना सकते हैं 125 पर 1। पाकिस्तान अपनी तारीख में पहली बार 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेल रहा है। इंग्लैंड की टीम 17 बरस के बाद पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कराची में तैयारियां इस वक्त जोबन पर हैं पहले मरहले की, जिसमें 4 मैचेस खेले जाएंगे और आप टिकट्स खरीद सकते हैं। देखिए आपके सामने जो जनरल स्टैंड का टिकट है वो सिर्फ 250 रुपये में, फर्स्ट क्लास का टिकट 500 रुपये में। तो आप pcb.bookme.pk पर जाइए और अपना टिकट फौरन बुक कर लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। 4 मैचेस कराची में, 3 लाहौर में, और जो पहले मैच की आमदनी है टिकट्स की वो जाएगी सैलाबजादगान की इमदाद के लिए। पीसीबी का एक बहुत ही एहसन इकदाम है ये, तो जरूर बढ़ चढ़ कर टिकट्स खरीदिए pcb.bookme.pk। बलोचिस्तान के मीडियम पेसर्स को खातिर खा मदद नहीं मिली रावलपिंडी की तरह मुल्तान में, रावलपिंडी के बरक्स मुल्तान में, इसलिए ज़्यादा विकेटें भी नहीं मिली इस मरहले में पहुंचकर, और इससे खेलने में कामयाब हुए। ये उश्कला छोड़ा साहबजादा फरहान ने। कम उनसे तवक्को की जाती है ऐसे शॉट्स की, क्योंकि सामने हिट आउट करते हैं और 4 कीमती रन्स केपी के लिए उन्होंने पाए। मतलब फिर जल्दी से पोजीशन में आ गए, चीज का उन्होंने अंदाजा लगाया कि खुरम शहजाद यॉर्कर करेंगे और अपनी इस चाल में कामयाब रहे। हैरान कर दिया उन्होंने खुरम शहजाद को। यहां से पहली गेंद पर बाउंड्री के बाद प्रेशर में ले लिया है उन्होंने।
यही खुरम शहजाद का हथियार है जिसको उन्होंने पहली गेंद पर ही नाकारा कर दिया। यहाँ यॉर्कर्स एक जमाने में बड़ी कारगर गेंद समझी जाती थी आखिरी 5-7 ओवर्स में, और अब उस पर हिट लगाना तकरीबन नामुमकिन होता था, खासतौर पर अगर रिवर्स स्विंग का भी अवसर होता। लेकिन अब जो बैट्समैन हैं इन्होंने हल निकाल लिया है इस मसले का भी, और वैसे ऐसे शॉट्स नाकाबिल यकीन देखने को मिलते हैं। यार आप देख सकते हैं कि उसी शॉट के नतीजे में फाइन लेग को अब पीछे धकेल दिया गया। मिड विकेट डीप है, थर्ड मैन पर जुनेद खान आगे लाएंगे। सिर्फ एक ही जानिब रैंप नहीं खेलते बैटर्स आजकल, दोनों जानिब खेलते हैं। रिवर्स रैंप है, अगर थर्ड मैन जिस तरह अभी ऊपर थे जुनेद, जॉस बटलर, जब अभी हम इंग्लैंड की सीरीज का जिक्र कर रहे थे, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों जानिब रैंप खेल सकते हैं। AB डिविलियर्स ने ये काम सबसे पहले शुरू किया था और अब तो ये आम होता चला जा रहा है। इस बार रिवायती हिट लगाई ऑफ साइड में और यहाँ पर बाउंड्री नहीं मिलेगी। पहुंच गए थे अली वकास, उनकी अच्छी कोशिश। इस पार्टनरशिप को तोड़ने की जरूरत है, वगरना ये मैच बलूचिस्तान की पहुंच से बाहर हो सकता है, क्योंकि शान मसूद पहले ही नहीं है, असद शफीक नहीं खेल रहे। यहाँ तो मेरा ख्याल है ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है नहीं, ये तो बाउंड्री बच चुकी। बिल्कुल, बलूचिस्तान ने अपने आप को काफी लेट डाउन किया फील्ड में। खुरम शहजाद भी कसूरवार ठहराए जाएंगे। अपनी गेंद पर उन्होंने कैच ड्रॉप किया था काफी अर्ली ही पावर प्ले के अंदर। अच्छा यॉर्कर कामरान गुलाम जो हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पर उनको अब यहाँ नॉट आउट जाने की कोशिश करना चाहिए, या हर गेंद पर बेहतर होगा कि वो शॉट्स लगाएं? इसमें अगर उनकी विकेट भी चली जाती है तो कोई मुजायका नहीं, क्योंकि दो पावर हिटर्स बड़ी शिद्दत से मुंतजिर हैं। जब तक दोनों सेट बैटर्स मौजूद हैं, दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि स्टेज ऐसी है। और अगर एक आउट हो जाता है तो फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा दूसरे को एक आध ओवर लंबा लेके चलना चाहिए, लेकिन इस हालत में तो दोनों को ट्राई करनी चाहिए। फिर खुद को यॉर्क करा लिया, अच्छी बॉलिंग। पहली गेंद पर यॉर्कर पर बाउंड्री लगी थी, लेकिन उसके बाद भी ये चाल चलते रहे खुरम शहजाद। यही वर्सिटिलिटी बैटर्स को चाहिए। कामरान गुलाम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन शायद अच्छी यॉर्कर, जो कि बहुत ही मुश्किल बॉल है, उसके खिलाफ उनके पास कोई कारगर हरबा नहीं है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट की जिस तरह हम ओवर की शुरू में बात कर रहे थे, इनके लिए तो थर्ड मैन ऊपर है, फाइन लेग पीछे है। बाउंड्री ऑप्शन जरूर आपको ढूंढना चाहिए यॉर्कर्स पे भी इस फॉर्मेट में। शायद ये वो चीज है जो कामरान गुलाम को अपनी गेम में ऐड करनी चाहिए। और यासिर शाह, उन्होंने यहाँ पर बहुत ही आला कोशिश की, नाकाबिले यकीन यासिर शाह। ये तकरीबन गेंद के हाथ नीचे अपने हाथ ला चले थे। न सिर्फ ये कि बाउंड्री बचाई, बल्कि कोशिश ऐसी थी जिससे बाकी जो टीम है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। खुद को पूरा झोंक दिया, जान पर खेल गए कप्तान। यही इंस्पिरेशन चाहिए होती है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कप्तान यासिर शाह, उनकी टीम को जरूरत है इस इंस्पिरेशन की। 16 के बाद 134 पर 1। It's been a good start for Khyber Pakhtunkhwa. Said fighting out his way on 73. Aman Ghulam on 26. Rehan Afridi, he played a good hand, 34. Was batting left
in the heart of Khyber Pakhtunkhwa. 4 overs. They need to accelerate. Should go maximum runs here. Balochistan, couple of drops have been costly for them. Junaid Khan brought back into the attack from far end. Gave away 12 runs in 2 overs. This is a crucial part of the innings. Both long on, long off, deep cover, deep mid-wicket, deep square leg. So idea would be to stay as straight as possible. Don't give any width outside off stump, because that is the area where they can extract runs. Well settled in, Sahibzada Farhan. That's the area, the offside. Junaid Khan needs to stay away from there. Catch it is called, but he takes it on the bounce. And just Junaid Khan probably suggesting could have been a couple of steps inside the rope. Judging catches has been an issue for the Balochistan fielders. If you make a package of their drop catches, it'll be a long one. Sahibzada Farhan has survived twice in this innings. Yasir now has swapped places at long off with Ahmad Butt. Full toss, will he take it? The captain says, I'm going to stand there, and he takes the catch. Kamran Ghulam's struggle comes to an end. 26 of 20 has he played his role. Only time will tell, but the second wicket falls. Some celebration for Balochistan. 2 good deliveries. The first one couldn't really carry to the fielder, but again, it's not easy to put these away when it's targeting inside the stumps. Yasir Shah, no problems there. That's why he switched himself to a crucial position of field. Kamran Ghulam, 26. He seemed decent. KP losing 2 on 135. Mohammad Sarwar walks in. Doesn't have a lot of time, but what he has is a certain set of skills where he can accelerate, and he should. Look at that strike rate, 154.5. That's what matters the most at this stage. Very handy cricketer, utility cricketer. Good with the ball, impactful with the bat. Have to take a hard look around the field where his run scoring options are. Got to keep on with the momentum. They've got themselves in a good position. Just 2 wickets down. It'll be a shame if they don't get a big score here. Cannot let the intensity levels down. That's the catch. Tipping full tosses, but some decent pace behind them, and never easy to put away, especially when it's inside the stumps. Big shot, wide of long on, and, well, clears it by a mile as well. Into the 80s now, Sahibzada. He's well settled in. Just shuffling across, created that leverage to put that full toss away. And we'll look at that, you could see his middle and leg stump. He knew that Junaid Khan is targeting the stumps. Slight miss in the length, full toss, bang. That's where they need to excel.
The loose deliveries, they need to put them away. Will they go for two? Oh, that's gone for four. The two fielders approaching were just so casually jogging towards it. I thought they got it covered. It's coming to them. He's turning the heat on. Wasn't an easy delivery, just crouched a little bit more to get that middle of the bat, and it raced away. Threading that needle, splits the two fielder, had no time. It's been an expensive over, Junaid Khan. 12 already, just one more delivery and Saibzada is on strike. Can he squeeze another boundary out of it? White given by the umpire. One of the over. One of the over. Today Balochistan has just been, don't know, under par. They seem a bit tired. Should I dare use the word bored? I mean, they've got equal stakes in this game as KP. Both are at 10 points. He's appealing. He's appealing for it. Not out. Not out, says the umpire, and says, over, go to your field positions. 147 for two. Marina, tell me, what do you feel? The last appeal? I never heard a sound. It's just a normal deflection of that delivery. Nothing much. Did not suggest any bat on it. But they're ambitious, obviously. They need breakthroughs, they need wickets. I'll say the stakes are higher for Balochistan because of their net run rate. If they lose, they're almost out of the tournament. If you compare the two pitches from yesterday and today, both were played by KP, different oppositions. How would you say? Any similarities, or what's better? Similarity is that it's not easy for scoring runs, but slightly I'll tilt towards the previous pitch. It was a touch better for scoring. Today it seems like it's difficult to get going with the big shots, and that's why what I liked in KP's approach, they switched towards the strike rotation. Big shot, big results, maximum. Saibzada Farhan is in a mood today to get to that 100. He's 90 now, off just 56. That's a really spectacular hit. Have a look at that, deep in crease, digging deep, down on one knee, and he gave it everything to clear that fence. Through the line, that's the safest area you can go. He's played really well, 90 of 56, picked up the ballers. His placement has been spot on. This is one hell of an innings. Should be two. One on the throw. Good running there. He's got potential, there's no doubt about it. His execution did suffer at times, but today his approach has been brilliant. And we look at that, most runs in single edition of National T20 Cup, right up on the top. Average of 40, that's sensational. 471 runs
Kamran Fakhr Tayyib and Ahmedshahzad to follow. Just a single. But that's what KP was missing, the top order contribution. They've got it now. They heavily relied on Sahibzada Farhan. They'll be happy. Got to a start. One innings almost done. What they need is to bowl with discipline now and with plans to take wickets. A lot of empty pockets. Got long on, long off. Deep cover. Deep mid-wicket. Way ahead of square. Got deep fine leg. Don't stray on the leg side. That's the word. Good ball right in the block hole. Well done, boy. Shaba boys, Shaba boys, Shaba boys. Foreign ball le le. You just showed us the KP dugout. We're just wondering, are they relaxed or are they just a little bit sitting on the edge of their seats thinking, is this enough or what is enough to win this? Because sometimes it's very difficult to make your team believe that you do have winning habits. 4 losses in a row and you haven't won a single game in Multan. You just feel, is it another day? That self-belief just starts, you know, leaking out somewhere. And the flip side of that is you win 1 and you're back on track. 159 for 2. Sahibzada Farhan, the X factor for Khyber Pakhtunkhwa. Whenever he comes out to bat and times the ball, he has always looked $1 million. That average that stands out. And no doubt Khyber Pakhtunkhwa have been relying on him. He's the ace player, the top order. 7 shy now of those 3 magical numbers. 6 actually, it's 94. Balochistan again, the fielding has been the area of concern, dropping him down twice in early stages. Just coming back to your point, I think if you look at the lineup, the bowling lineup for Khyber Pakhtunkhwa, still got 2 overs. They would be eyeing something around probably 175, 180. They've got that arsenal to defend such a score. It's just they're missing how they can plan to bowl out the opposition to take wickets. They've got the pace, they've got the swing, just the execution. Boundary. Runs galore. 163. Still have 11 balls to go. Well, luck favors the brave. He wasn't trying to play it there, but some connection and raced away for 4 runs. Wasn't a bad delivery, you have to feel for Junaid Khan. Just trying to keep everything tight, just around that 4th, 5th stump. Got the 3rd man in, so margin of error is very small. Can they come back? Yeah, they will come back. Running's been good. 100 is right there. 61 deliveries. Sahibzada Farhan. They've been waiting for this moment, haven't they? They needed someone to come out there and prove it that KP still got it in them. Sahibzada Farhan, the 2nd man to get 100 in this season of National T20 after Sharjeel Khan. Magnificent batting. He came, he took his hand up, took the responsibility, and that's the double.
cruised him towards his 100. He's been spot on today. You could see the approach, you could see the desperation in his eyes. He wanted to make an impact, and he did. It's in the air. There's a man under it. And, oh, he's dropped it. Khurram Shahzad. How many ways can you describe drop catches in commentary? We run out of words when Balochistan is fielding. I don't know what's wrong with them. They've not been like this. Got big on him. He kept on rising, and that's why he wasn't in control. But Khurram Shahzad had all the time in the world to get underneath. And the agony on Junaid Khan's face. Yasir Shah must have had head under his hand. .102 magnificent innings by Sahibzada Farhan. That's a drop. They usually say that these sort of catches are hard because you've got enough time to think about a lot of things and just make it complicated. And gone. Finally. Somebody said, Allah tera shukar hai. And that's Bismillah Khan. Junaid Khan will finally have some smile on his face. No, he's not amused. But nonetheless, he's trying to make it big this time. Really couldn't find that elevation to clear that boundary. Straight to Bangalzai. Yeah, I think he's the one thanking. But you have to give it to Sahibzada Farhan. Spectacular innings. Accelerated at the right time. He kept on the scoreboard ticking 102. He'll take it any day, and KP will be delighted with the way he stood up. 167 for 3, KP. The promotion captain comes out to bat. And number 5. Server also could have been a good option. I think the captain wants himself. Not a bad thing to do. You take the responsibility up front. Oh, Server is already there. I'm sorry. I was talking about the other tall guy. Was it Amir also? He got his 100 of 61 deliveries, and that's how he accelerated. He was scoring at 120 strike rate, but then he went on changing and shifting gears. How many more can they add in the last 6? If they take it to around 180s, it'll be good. It'll be very good. There'll be pressure on Balochistan. They've chosen to bowl first. It hasn't really worked out for them. But you see how important catches are. They've dropped Sahibzada Farhan the first time. He just almost started his innings, was around the power play. Then he was dropped again by Ahmad, but a long off of Yasir Shah. And then again by Khurram Shahzad 3 times. He was dropped twice. The first time he was dropped, he was batting at 7. Yeah, so it cost that drop, cost them 97 runs. Okay, 95. Dropping catches are costly every time, especially in the shorter format. Every player, every batter walks in to make an impact. They'll go big, they'll go hard. Every time you drop a catch, add at least 25 to 30 runs.
this case, 95, as you said. Ahmad Bhatt will have to be careful pitching the ball up to Khalid Usman because he likes to go down the track. That's the first one. It's a hard one, but it has been taken. Second one again. I think that's the final one. Third one. I'm missing one more, but he got 3 chances to reach that 100. Come back for 2. That's the call. Easily completing it. Bangalzai is scratch his elbow or something while trying to feed, but he just suggests he's fine. Yeah, scrubbing against the grass, the dry grass there. It's just the edge of that square. No boundaries yet in the last over. 2 balls to go. He's been bowling those low full tosses. He's a smart bowler, Ahmad Bhatt, especially in the death overs. He knows exactly how to mix it up. He will not be predictable. The server would probably like to shuffle across, target that leg side behind square area. Oh, he was expecting a wide there, but the umpire standing still. 1 for the over. That looks pretty high. It did for sure. Server is not happy. He was definitely waiting for that white call. Unlucky. Last ball of KP's innings. Big shot. Chance. No. He'll come back for 2. He's making sure they go for the 3rd. Keep coming, keep coming. Look at that. There's always 3. Oh, that's really not nice. At this level, unacceptable. They run 3. That's sloppy. You need to finish your job as a fielder. It doesn't matter if that's the last delivery of the innings. Rush in, try to contain as many runs as possible. He was just rolling around, and they capitalized it. It did hit the ball on the head. I'm not sure if it was server, but they'll take it. 3 runs in the last delivery. .175 in 3 in 20 overs. That's a good score. It will take some batting from Balochistan to chase this down. They've opted to chase, so they're pretty sure and confident that they have the arsenal to get this going. Balochistan, that's in fact Khyber Pakhtunkhwa's batting lineup. On the top, Saidbada Farhan with a brilliant 100, scored 102 of 64 deliveries. That was the anchor innings of Khyber Pakhtunkhwa. Good hand by Rehan Afridi, Kamran Ghulam as well, 26. Sarwar and Khalid Usman couldn't really extract those extra 10 to 15 runs at the end, but they'll take it. 175 is a challenging target on this surface. Lots of options tried, but only 2 worked. Junaid Khan 2 for 34, and the captain 1 for 27. Khyber Pakhtunkhwa started off. The opening pair started off really well. Ren, there was no problem in conceding them. The boundaries kept on going. They rotated the strike really well. Yes, some lousy fielding in the start. This was the first drop. Saidbada Farhan.
really get underneath that catch. Khurram Shahzad. They made sure that things went according to their plan, attacking whenever the opportunity was there. He was very assertive in his approach. Rehan Afridi as well made sure that they provided that platform in that power play. That was a brilliant shot down the track against Kabaddi. Rehan this time inside out made sure that they kept pushing the accelerator. This was the first blow for Khyber Pakhtunkhwa, straight to the fielder. Yasir Shah. For a moment it looked like it was a catch, but Ahmad Bhatt totally misjudged it. The runs kept on flowing from Saifzada Farhan. Managed to grab each and every opportunity, played the field really well. This one was massive. Travelled all the way. Few couple of blows that set Balochistan back in the corner. Junaid Khan bowled well, getting those low full tosses going, and not really easy to hit them out. That started earning him wickets. At times he was hit out of the park as well. But he tried to keep everything within the stumps, and that probably did work for him, and he got those 2 wickets as well. But the sixes or the big shots from the KP batters were pretty clean hits. You really don't call them slogs. Some lucky shots will come round the way. This is the wicket. In fact, this wasn't caught. It was Khurram Shahzad who dropped it. This was the 3rd time Sahibzada Farhan was dropped. This time he was taken by Bangalzai in the deep, and Junaid got his 2nd wicket. After that, Sarwar and his captain Khalid Usman tried to add as much as possible to the total, and they ran 3 on the last ball, which was again something very ordinary in terms of fielding from the Balochistan side. 175 posted by KP in this last league game for the team, and this is what the target is for Balochistan at 8.75 runs and over. We'll come back to you with the reply.
very warm welcome back to Multan Cricket Stadium. Balochistan versus Khyber Pakhtunkhwa in Kingdom Valley National T20 Cup, the last day of the group stage. Khyber Pakhtunkhwa, a formidable total on the back of a wonderful 100 from Shahzada Farhan, who made 102. A slice of luck early doors when he was dropped, but then he made sure he punished Balochistan. Rehan Afridi's contribution was immense. He got the ball rolling in the power play. Partnership with Kamran Ghulam also propelled Khyber Pakhtunkhwa. Junaid Khan with 2 for 34. The pick of the bowlers from Balochistan. From Shahzad was expensive. Yasir Shah once again, very tidy spell. 1 for 27. Just the 2 extras. But Balochistan were very sloppy in the field. Once again, this has been their Achilles heel throughout this championship. They have let themselves down quite badly. Khyber Pakhtunkhwa have made their way to the middle. Bismillah Khan and Hasibullah, 2 openers for Balochistan, both of them hailing from Balochistan. Bismillah is making a comeback into the first 11. He's been in prolific touch in the second 11. His latest exploits were 93 against Sindh, 11 fours and 5 sixes. Umpire Tahir Rashid. And it shows a Braza. 4th in there, 175. 176 for Balochistan to qualify outright for the semi-final. They know their goal. It's be interesting to see how they go about it. Good evening, Sikandar. Hasibullah. And what Balochistan needs, Bismillah. That's how they should start their innings. And that's how they're doing it. And they are starting with Bismillah because he's taking first strike. Arshad Iqbal had a fiery night last night. He was under fire from Samin Gul. He got very angry. Lost his composure a little bit, but will be looking to make amends. Bismillah, on the other hand, is a seasoned campaigner. Just the regulation fielder slip in. Ring of fielders on the offside. As umpire Tahir has has called for play. 176 is the target. It starts with the extra, a wide. More I say, less it seems. Good to see Bismillah in the first 11. He has his opportunity to put his mark around. He's been in form, as he just shared some numbers, 93 not out. So he can just carry forward from there. Not burden yourself with expectations. Just play your game. Hasibullah is in good form. Support you out there. First runs for Balochistan with the bat. And Bismillah is off the mark. Bowling has been KP's strength. They'll be really confident to defend this score. They've benched the 2 Imrans, Imran Senior and Muhammad Imran. Relying heavily on the youngsters now, Arshad Iqbal, Ehsanullah and Abbas Afridi, who we haven't seen in this championship just yet. That's a very tentative poke outside the off stump from Hasibullah.
moving away from the stumps and then just hanging the bat out. Really not in any position to attempt any shot on that. It shows that he was expecting that short pitch delivery. KP bowlers have developed this reputation in this championship. Very awkward with the short pitch deliveries because they're tall. Slightly invariable bounce as well. Really keep the batters in check. Leg by signaled by the umpire. Once again, not prepared to cover the line. Definitely, it's the back of his mind. He's thinking about that short pitch delivery. Good from Arshad. He's keeping him guessing, keeping him waiting for that one. Just moving away, pulling that one on the onside. Just a single. KP though played a game last night, but they look more energetic than their opposition. And just get that feeling that they want to win this match. And there's plenty of chirp, plenty of noise in the field as well. They're really up for it. It was astonishing to see how much they were under pressure in their batting innings last night. There was one phase when spinners were bowling. Never seen KP bat like that. Looks like they're coming out of that shell with this batting performance today. Spin leg stump line. Just trying to get his bearing right. Arshad Iqbal. He's a good bowler, a good young fast prospect for Pakistan. Surely will get his opportunity sometime around if he keeps working hard the way he is. He's also used to bowling in front of big crowds. It takes a lot out of you as a sportsman if you can absorb that pressure, the responsibilities. He's played for 2 different franchises in the PSL. So he's got the taste of the big stage already at a young age. That's played nicely. That'll be 4. Just making a bit of room and square cutting that one through the gap. Just crunched it. Giving himself some room. No force at all. Just pure timing. Angular bat allowed him to find the gap. Good finish to the over, 9 for none. Right arm over. Hasanullah will share the new ball, 19 years of age, very new to this T20 circuit. But he too is one of those players who's played PSL. He's played for Multan Sultans, had an opportunity I think twice. And to be with a winning team just adds more confidence. Really noticed Hasib has played 3 delivery once again. He's just a little shaky. Expecting that short pitch delivery. Hassan did give him that width. Couple of 50s in this championship. Young batter with a lot of promise. Finding his feet in this format.
It's like the two batters are expecting a shorter length from the two bowlers, so just keeping themselves on the back foot, and they're trying to score mostly behind the square on the offside. Just waiting a fraction longer and then just opening the face of the plate, because the short balls have also been a bit wayward. They're not the ones where you are cramped up for space or room as a batter. These are all regular back of length deliveries. We haven't seen a genuine bouncer just yet. Yeah, you'd expect that. See, the similarity between Arshad Iqbal and Ehsan Ullah, what we've noticed is that they do hit the deck hard. They're not really big fans of pitching it up, which is why we saw KP having two slips for both these bowlers. But the lengths they had adopted would never bring the slips in play. Make a good point. Direct hit. Always creates that doubt. He's back in safely. If you see around the world as well, the taller bowlers, generally their natural lengths are slightly back of the length. And you may feel it will be an easy adjustment for them to just pitch the ball up and bring the batters on the front foot. That is actually a very hard skill to develop. Over the years, we've seen the likes of Andrew Caddick, Stuart Broad. Obviously, there are some exceptions. If you think about Glenn McGrath, he was able to do that very successfully over a long period of time. So this is T20 cricket. Still, there are games like last night where you need wickets. You got to take that chance. Try and bring the batters onto the front foot, especially if you're bowling with two slips like these two were last night. Not today. Got scattered field square of the wicket, so they can bowl back of a length. Today they have got a lot more runs to defend than last night. What these two batters need to do is allow themselves a bit of time out there. Wait for that bad ball, get that odd boundary going. Once the eye is in, then express yourself. This will not help. Because the way Hasibullah is approaching, trying to play something behind the square on the offside, he's exposing his stumps. He doesn't seem in a good position. He's all at sea. Doesn't know what to do. He hasn't got behind the line of the ball on any single occasion. See, he's playing plenty of dots. He could have done that by getting behind the line and played correctly. He would have more confidence by now. Also, he likes to drive through covers. He also has a very good back foot punch. But for that, he needs to be in a good position. It's in the air, just chipped. Will come back for two. Oh, that's four. That outfield is deceptively quick. Adil Amin at one stage looked favourite to hold that ball back in, but it kept gathering pace. Another boundary for the last delivery of the over. 2 gone, 15 for none. Kingdom Valley, a royal lifestyle. Go to their official Facebook page, Kingdom Valley Private Limited, and get a chance to win exciting prizes. Tournament is coming to an end. You can be the next winner as well. "15 wickets in 10 games. Server is just gentle medium pace. He does have a knack of taking wickets, particularly in his first over. Just the 1-4 for him.
That's in the air and safe. It's the power play time, so you won't have anyone in the deep in that region that's long on. Good calculated strike from Bismillah. He saw the mid-on fielder was up in the ring, gave himself some room. Server tried to follow, but gave him the length to work with. Just got underneath it. Enough bat to just clear that infield. Yeah, server with his pace a little too short. You see the amount of time Bismillah had to rock back and play it. This would be better. I know the idea, what he's trying to do with his lack of pace compared to Ahsanullah. He wants them to pull one in the air. It would be a sky. But he was a little too short on the delivery where he was hit for a boundary. Bismillah just rocked back and he easily pulled that over long on. So you can imagine he's not quick enough to be trying that. His slower ones work. There you go. This one just didn't come up. We've seen that invariable bounce throughout the day. Bismillah has played a shorter ball. Once again, playing across the line. Went way underneath his bat. Straight is better option. Dragged it a little bit too far and completely missed it. Not nice. That line is incorrect. The length is not going to help. Just because you got 175 on board doesn't mean you can experiment. Server, when he's running in, he knows the batters are looking to get after him. Boundary of the first delivery. And now boundary again. Two straight. Bismillah this time didn't move across. And just waited, just helped it on its way. Bismillah is far too experienced to fall into these tricks of Server. Balochistan gathering momentum. Feel like it was there for the taking. There's no sweeper on the offside. Bismillah was disappointed with himself. Just a little bit of sea movement, I think, that defeated his stroke. He's prepared to take chance against him. Yes, smart bowling. Saw him moving away and bowled it wide outside the off stump. 3 gone, 23 for no loss. That's a good ball and well played by Hasibullah. Don't usually expect that length. So you got to be ready. Good presence of mind. This is Hasibullah's favorite area. Square of the wicket on the offside. Once he got an opportunity, the ball in his half. None of these deliveries that he's played, he's not looking to cover up. Can't get away with this kind of technique for far too long at a higher level. Oh, where has he played that? Should be out. Yes, he's gone.
He was trying to play it over fine leg. He's ended up third man. Bismillah Khan has to walk. And the KP bowlers claim their first. Strange stroke. First he was looking for the ramp, and then when he got the ball where he didn't want it, he still went ahead with the shot. Ended up in Arshad Iqbal's hands. Hassan, who is persisting with the fuller length in this over, gets the reward. Prolific Bismillah goes for 15. Balochistan 24 for 1. Great to see that 3 Balochistan players at the top of the order, and at number 3 playing for Balochistan, Bangalzai had a decent tournament early in his career. These stats will improve. He's been in decent touch throughout this tournament. Straight away off the mark with the full toss. Will be a boundary. See how hard this pitch is. Bangalzai played it back into the pitch and it went over Hassan's head. If you can do that, Hassan is a very, very tall lad. And with outstretched arm, it was quite high, but that ball still bounced over him. Bangalzai off the mark with a confident blow. Bismillah Khan's wicket. Have a look at what he's trying to do and what exactly happened. And it's trouble because Hassan has got pace. Aiming for fine leg, ending up at third man. Got 2 boundaries in the previous over, Bismillah. This sometimes happens when your partner is just been a little hush. 7 of 9 for Hasibullah. I wonder what stroke he would have played if he stayed in his normal position. It was quite full outside the off stump, not the half volley. Even in the end, he was still giving it a flick to see if he can get it over that third man. Didn't abort from his stroke. Now thinking, but by that time it's too late. Oh, that's close. Inside edge for a boundary. Bangalzai would take that. 4 gone, 32 for 1. बिस्मिल्लाह खान अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एहसानुल्लाह वो शिकार किए बगैर रहते नहीं हैं अपनी बॉलिंग पर, और बहुत ही उन्होंने गैर मामूली सा शॉट खेलने की कोशिश की। एक ऐसे बॉलर के खिलाफ जो सबसे कदावर हैं इस वक्त और बहुत ही ख़तरनाक भी हैं।
35 पर 1 विकेट गंवाई है। अभी 2 ओवर्स पावर प्ले के बाकी हैं, इसलिए कोशिश यही है अब्बास अफरीदी के सामने और ज़्यादा रन्स बना लिए जाएं, क्योंकि ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं अब्बास अफरीदी। दूसरा रन आसानी के साथ बना लेंगे। अली यूनुस हमारे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में, और ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होना चाहिए और जोर लग रहा है दोनों टीमों से बराबर। यहाँ बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिली अभी तक हमें। 142 रन अभी रहते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि जिस तरीके की बैटिंग है बलूचिस्तान की, इनको चेस करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानब जिस तरीके की बॉलिंग एहसानुल्लाह कर रहे हैं, जिस बॉलिंग फॉर्म में है, वो कमाल की है। और ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि वो शिकार किए बगैर नहीं रहते हैं, तो एक शिकार तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ज्यादा जोर से खेलने चले गए थे, बार बार बचे गेंद बआसानी ये जा सकती थी इनकी स्टंप्स में। कई बार हमने देखा है इस शॉट पर प्ले डाउन होते हुए बैट्समैनों को। यहाँ जोर से जब भी आप मारने जाएंगे तो चांस बढ़ जाएगा इनसाइड एज का, और यही हसीबुल्लाह क्योंकि प्रेशर है, रन आ नहीं रहे हैं आसानी से। देखिए एक बार फिर प्लान नहीं था, ऐसे जैसे प्री प्लान कि मैंने हिट मारना है तो मारना है। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ज्यादा नजरें हैं हसीबुल्लाह पे, क्योंकि आगाज बहुत शानदार रहा है करियर का, और हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा यहां से। फिर ज्यादा जोर से हिट करने चले गए, ओवर हिट करते हुए कई बार ये अपनी शेप गंवा बैठते हैं हसीबुल्लाह। इससे पहले एक बड़ा दिलकश इन्होंने फ्लिक शॉट खेला था लेग साइड, यानी एहसानुल्लाह के खिलाफ रफ्तार से ये निपटना जानते हैं। ये खूबी होनी चाहिए एक अच्छे ओपनिंग बैट्समैन में। क्या बिस्मिल्लाह खान की अगर बात करें, आगाज उनको अच्छा मिल गया था, अच्छे रन्स करके आ रहे थे, लेकिन प्री प्लान खेल गए, थोड़ी लाइन चेंज किया एहसानुल्लाह ने, क्लेवर बॉलिंग, लेकिन क्योंकि वो प्री प्लान थे उनको ये शॉट मारना ही था, इसलिए थोड़ा अंडरनीथ और बल्ला होता तो शायद बेहतर शॉट जा सकता था, लेकिन प्री प्लान शॉट था ये। पुल शॉट खेला और गेंद चली जाएगी हाथों में। एक और विकेट गिर गई। साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कैचेस दिए हैं, लेकिन ये सरवर आफरीदी थे गेंद के नीचे जिन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया, और बंगल से ही वो भी शॉर्ट गेंद का निशाना बन गए। या क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो रहा था रन्स करने का, यहाँ पे भी एक जबरदस्ती शॉट मारने चले गए, बैलेंस फ्रंट फुट पे रहा। ये केपी की साइड ही कैच नहीं छोड़ती, आपको यहाँ पे बारियां नहीं मिलती हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि बलूचिस्तान एक स्पेशलिस्ट है कैच छोड़ने में, ऐसा आपको अपने ओपोनेंट से नहीं मिलेगा। 8 रन बना सके, 35 पर 2 बलूचिस्तान। अली वकास को पावर प्ले में ही आज जाना पड़ा, और जो खैबर पख्तूनख्वा की इस मुल्तान की पिच पर शॉर्ट बॉलिंग करने की मंसूबाबंदी है वो रंग लाई है। हर मैच में ही उन्होंने शॉर्ट गेंद पर विकेटें हासिल की हैं। अब्बास अफरीदी की रफ्तार पहले से बढ़ी हुई है, ये एक फर्क हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि इनका जो प्लान लगता है वो शॉर्ट डिलीवरीज है, क्योंकि सारे फास्ट बॉलर्स एक तरह के हैं, लेंथ बॉलिंग करते हैं, हार्ड लेंथ पे अटैक करते हैं, और इसी तरीके से विकेट्स भी हासिल करते हैं। एहसानुल्लाह की बात करें, अब्बास अफरीदी की बात करें, अरशद इकबाल की बात करें, ये सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो हिट द डेक हार्ड करते हैं, आगे बॉल नहीं करते हैं। इस वजह से इनको इन पिचेस पे कामयाबी हासिल हो रही है। इस बार फिर उठा खेला, 2 फील्डर गेंद के नीचे माइल हो रहे हैं, आपस में टकराए, और साहबजादा फरहान का ये 11वां कैच। हालांकि आदिल अमीन उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं थे, लेकिन इस गेंद को जाने नहीं दिया। जो ही ये हाथ लगी साहबजादा के, अच्छा कैच उन्होंने लिया, अच्छा रनिंग कैच। या आज केपी की साइड मुख्तलिफ नजर आई है हमें,
क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे अपना मोमेंटम खो रहे हैं, लेकिन आज इस तरीके से कमबैक किया, यही कैच उसकी निशानी है। कमिटमेंट लेवल 100% साहबजादा फरहान की जानिब से, क्योंकि आसान नहीं होता है जब आपको दूसरा फील्डर साथ कॉल कर रहा हो। ये एक अच्छी विकेट हासिल की है यहाँ पे। हसीबुल्लाह 10 रन बना सके, 36 पर 3 बलोचिस्तान। हारिस सुहेल को भी जल्दी मैदान में उतरना पड़ा, और ये जो इतना ज़्यादा 100 से ज़्यादा मुकाबलों का तजुर्बा है, आज उसको काम में लाने की ज़रूरत होगी। अब इस इनिंग्स को ज़्यादा डीप ले जाना पड़ेगा हारिस को। दरकार औसत पहले ही 9.2 तक पहुंच चुकी है, और अब्बास अफरीदी, जिनको हम समझ सकते थे कि शायद ये वीक लिंक होंगे इस बॉलिंग अटैक में, उनने अपना करिश्मा दिखा दिया है पहले ही ओवर में 2 विकेटें लेकर 36 पर 3। छत्तीस रन बना लिए बलोचिस्तान ने, 3 विकेट्स गवा के इस तरीके से आखिरी विकेट हासिल की। हसीबुल्लाह, स्कोरबोर्ड का जब प्रेशर होता है तो आपको रन्स के लिए जाना होता है, और यही है हसीबुल्लाह की शायद हुआ, क्योंकि रन्स की तलाश में थे। बहुत ही शानदार कैच, नजरें जमाई रखी बॉल पे एंड तक, और लकी रहे कि बॉल लातों से नहीं गया। अभी आप बात कर रहे थे अब्बास अफरीदी की, क्योंकि पहले नए बॉल के इतनी शानदार बॉलिंग हो रही है कि जब भी एक वीक लिंक आता है या कमजोर बॉलर आता है तो बैटर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं उनको रन्स के लिए जाएं, और इसी असना में अपने विकेट्स गंवा रहे हैं। यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बॉलिंग ऐसी हो रही थी दोनों एंड से, खासतौर पर एहसानुल्लाह के एंड से, कि जैसे बैटिंग लाइन ने बेड़ियां पहन ली हूँ, और यूं ही आप देखते हैं कि कम रफ्तार का बॉलर सामने आया है तो अब ग्राल ज़्यादा टपकने लगती है और आप ओवर हिट करने चले जाते हैं। अब्बास अफरीदी ने बहुत मुतासिर किया है, उनका पहला ही मैच है। ये उमर गुल के भतीजे हैं अब्बास अफरीदी, नवा कलीस से आए, जहांगीर खान और जान शेर के इलाके से। अरे सोहेल ने अच्छी फॉर्म वापस हासिल की थी आखिरी मैच में जब ये बैटिंग करने आए थे, टच में नजर आए थे, काफी अच्छे स्ट्रोक खेले, मिडिल ऑफ द बैट से, फुटवर्क भी शानदार रहा। अच्छा साइन है ये बलूचिस्तान के लिए कि अगर हारिस सोहेल जैसे प्लेयर रन्स करना शुरू कर दें, ऑल्दो ये मैच बहुत अहम है, अगर यहाँ नहीं करेंगे तो शायद इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अभी ये मैच पड़ा है, 140 रन और करने हैं, तो बलूचिस्तान होप करेगा कि हारिस सोहेल यहाँ से एंड तक खेलें। और क्योंकि आज असद शफीक और शान मसूद का तजुर्बा नहीं था बलूचिस्तान की चोटी की बैटिंग में, और वो भी एक वजह है। ये जो 3 विकेटें ये के बाद दीगरे गिरी हैं, हवा में खेला, गेंद सामने गिरी, फिर गेंद बल्ले पर रहा नहीं रही, किसी हद तक लेट हो गए थे हारिस सोहेल पुल करते हुए। ये अच्छी बॉलिंग है, और ये हम बात कर रहे थे जिस तरीके से हारिस सोहेल ने फॉर्म हासिल की है नॉर्दर्न के अगेंस्ट, बहुत ही शानदार टाइमर ऑफ द बॉल है, लेजी एलिगेंस है इनके अंदर एक, और जब भी अपने फ्लो में होते हैं इनसे बेहतर कोई नहीं खेलता है, एक शानदार साइट होता है देखने वाले के लिए। यहाँ नॉर्दर्न की बॉलिंग को इनने बिल्कुल उड़ा कर रख दिया था और आसानी से कामयाबी दिला दी थी। 170 रन का पीछा कर रही थी उस दिन बलूचिस्तान। अरशद इकबाल कल ये मुल्तान से भी ज्यादा गर्म लग रहे थे, इनको बैटिंग करते हुए गेंदें लगी, बॉलिंग करते हुए इनने बाउंसर्स किए, बहुत ज्यादा रन दिए, एक ही विकेट हासिल की। आज भी
ये बेहतर लगे कल के मुकाबले में। या कल वो जो इंसिडेंट हुआ बहुत एक समीन गुल और इनके दरमियान में, जब उन्होंने बाउंसर किया और आके हंसना शुरू हो गए, उसके बाद से एक फ्लेयर अप हो गए थे। ऑल्दो मैच नहीं जीत सके लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई, एफर्ट बहुत कमाल की रही। रन इतने नहीं थे जो डिफेंड किए जा सकते, लेकिन इनकी एफर्ट में कमी नहीं देखेंगे आप कभी। कल थोड़ा सा जोश में इनने होश खो दिया था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज स्कोर बोर्ड का दबाव भी नहीं है। कल 134 रन डिफेंड करने थे। देखने में आया कि बॉल उस तरीके से बल्ले पे अच्छे तरीके से आ नहीं रहा है, थोड़ा होल्ड अप कर रहा है पिच पे। और ये जो लेंथ है इन फास्ट बॉलर्स की, जो केपी के फास्ट बॉलर्स हैं, लंबे कद के हैं, हाई आर्म एक्शंस हैं सबके, जब पटकते हैं बॉल क्रीज पे तो वो मुश्किल हो जाता है लेंथ, क्योंकि अक्सर आप जज नहीं कर पाते हैं कि दूर कितना दूर है लेंथ। जैसे आपने विकेट्स गिरते हुए देखी है, इसी तरीके से कि आप लेंथ को सही तरीके से जज नहीं कर पाए। और ऐसी पिच पर जो कि टू पेस्ट हो और इसमें कई गेंदें नीचे भी रह रही हूं, तो इससे लंबे कद के फास्ट बॉलर्स को खेलना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाई आर्म एक्शंस हैं और जिस तरह आपने कहा कि गेंद को हार्ड लेंथ पर पटकने की अहलियत है। लेकिन ये आला शॉट, हारिस सुहेल जब पुल करते हैं तो फिर इनसे कम ही आपको अच्छा खेलने वाले देखने को मिलते हैं। ये 6 रन, ये अच्छी टेक्निक है। अगर आपने इस लेंथ पे स्कोर करना है तो ये बेहतर है। अपनी टांग को क्लियर किया, दोनों फील्डर्स सर्कल के अंदर थे और आराम से टाइम किया बॉल, 6 रन हासिल किए। बहुत अहम 6 हैं इनके लिए, क्योंकि इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा बलूचिस्तान और हारिस को। 44 पर 3। मुल्तान में अब धूप खासी हद तक मान पड़ने लगी है और दिन जो है मगरिब को जा लगा है। बलूचिस्तान की बैटिंग, टॉप ऑर्डर बैटिंग भी सिमट गई है। हालात ज्यादा खुशकुन नहीं है। ज्यादा करीब थी कट करने के लिए। फास्ट बॉलर जो हैं ये मुकाबले पर भी बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स वो हंट करते हैं पेयर्स में। ऐसा लगा जैसे पढ़ने के बाद स्किट हो गया, बॉल गया और लेंथ शानदार रही है। शायद आज बहुत अच्छे प्लान करके आए हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आज केपी की साइड उतरी है क्योंकि हर्ट थे, बड़ी साइड है। जब 4 मैचेस आप लगातार हारते हैं तो आपको वापसी करनी होती है। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान को ये देखने की जरूरत है कि इस मैदान पर 7 बार ऐसा हो चुका है कि बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने कामयाबी हासिल की हो, तो रन चेज जो है वो किया जा सकता है। अब्बास आफरीदी ये टूर्नामेंट में पहली बार आए हैं। राउंड द विकेट, क्रॉस द सीम भी बॉलिंग करते हैं। राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर्स को आने का एक मकसद ये भी है कि ये ऑफ साइड में ना खेल सकें। बलूचिस्तान की आपने बात की, आप जितना मर्जी प्लान कर लीजिए, जितनी मर्जी स्ट्रैटेजीज बना लीजिए, लेकिन अगर आप फील्ड में कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो आप कोई भी मैच नहीं जीत पाएंगे इस तरीके से। इससे पहले हमने देखा सिंध का अगेंस्ट शजील खान का कैच छोड़ा, उन्होंने 100 रन बनाए। आज साहबजादा फरहान के 2 कैचेस छूटे, उन्होंने 100 रन बनाए। जब आप बड़े प्लेयर्स के कैच छोड़ेंगे, आप में जितना मर्जी टैलेंट मौजूद हो, आप हमेशा ही गेम में पीछे रहेंगे। इस बार गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, ऑफ साइड स्वीपर पहुंच जाएंगे। एक मुमकिन वजह ये हो सकती है कि बलूचिस्तान में जो ज्यादातर खिलाड़ी थे मां सिवाय बंगल जई या हसीबुल्ला के, ये जरा बड़ी उम्र के खिलाड़ी थे। इनकी जो औसत उम्र है दूसरी टीमों से ज्यादा थी, तो टूर्नामेंट जो आगे बढ़ा है, वक्त गुजरा है, थोड़ा थकावट के भी आसार होंगे। देखिए इस लेवल पे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को ये बहाने सूट तो नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं और एक्सपीरियंस आपके पास होता है।
और जिस तरीके से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचेस पकड़ने हो, बहुत आसान कैचेस छोड़े हैं। हारिस सोहेल ने जैसे कैच छोड़ा, जिस तरीके से आज कॉटन बोल्ट छोड़ा है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन एटलीस्ट मेरे नज़र में तो कोई नहीं है। हसीबुल्ला यंग हैं, उन्होंने बहुत आसान कैच छोड़ा था उस दिन शजील खान का, उन्होंने 100 रन बना दिए। खुरम शहजाद ने आज छोड़ा। तो प्रोफेशनल जब आप होते हैं तो आपके पास बहाने नहीं होते हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस होती है। बहुत ज़्यादा आगे आ गए थे और हारिस सोहेल जो हैं ये ज़्यादा रिस्की रन लेते नहीं हैं, इस बात को समझना होगा अली वकास को। साहबजादा फरहान ये पेश हैं, बहुत अच्छा कैच लिया। पिछले साल भी सबसे ज़्यादा कैचेस नेशनल T20 कप में साहबजादा फरहान ने लिए थे। इस साल भी 11 कैचेस पकड़ चुके हैं। अभी आप कैचेस ड्रॉप करने की बात कर रहे थे, कैचेस पकड़े भी अच्छे गए हैं। साहबजादा फरहान तो अच्छे फील्डर हैं। जब आप अच्छे फील्डर होते हैं तो आप हॉट स्पॉट्स पे खड़े होते हैं जहाँ पे कैचेस ज़्यादा आते हैं। गेंद को ग्लांस किया, गलती की गुंजाइश वो निश्ता होती है। हारिस सोहेल जब फॉर्म में हूँ और गेंद तक सिर्फ बल्ला ले जाने की जरूरत थी। 50 रन बलोचिस्तान ने ये मैदान भी मार लिया है। जी हाँ, लाइन खराब है। इस लाइन पे अगर आप बॉल करते रहेंगे तो रन आते रहेंगे। ये इजी पिकिंग है, सिर्फ बल्ला लगाया और 4 रन हासिल किए। यहाँ पे ख्याल करना होगा केपी को, क्योंकि हारिस सोहेल जैसे बैटर को अगर आप जल्दी आउट नहीं करेंगे तो ये मैच को दूर ले जाएंगे। ये बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही क्लासिकल मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। इस बार पहले बैट्समैन ने फॉल्स शॉट खेला, उसके बाद फील्डिंग का मेयार खासा अबतर था। एहसानुल्लाह लंबे कद के हैं और ये आसानी के साथ इस गेंद को उन्हें रोक लेना चाहिए था, लेकिन ये बाउंस हो गई और ज्यादा उनके बाएं तरफ से निकल गई। जहाँ ओवर रन कर गए, शायद अभी ताज़ा अपना स्पेल किया है तो थकावट का भी कोई सीन होगा, लेकिन इस लेवल पे ऐसी गलतियां नहीं करते हैं आप। अच्छा आगाज़ किया था बिस्मिल्लाह ने, काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था उनसे। प्रमोट किया गया उनको सेकंड 11 से, अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले हमें बिस्मिल्लाह से। तब एक प्री प्लान शॉट जिसका कुछ कर नहीं सकते थे। उसके बाद अच्छा आगाज़ एक बार फिर अगले प्लेयर का बंगल जई का, लेकिन स्कोरबोर्ड का जो प्रेशर था वो बढ़ता चला गया क्योंकि रन्स नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ से हसीबुल्ला ने भी ऐसे ही मुंह उठा के शॉट मार दिया और अपनी विकेट गंवा दी। एक अच्छा पावर प्ले केपी के लिए कहूंगा। क्योंकि दो इस वक्त लेफ्ट हैंडर्स मौजूद हैं, अली और हारिस, इसलिए यहाँ ऑफ स्पिनर को लाया जा रहा है बॉलिंग करने के लिए। इंग्लैंड और पाकिस्तान की T20 सीरीज शुरू होने को है और ये जो पहला मैच है 20 सितंबर को, इसकी तमाम आमदन ये दी जाएगी पाकिस्तान में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, बड़ी नोबल कॉज है। PCB bookme.pk ये जरिया है टिकट बुक करने का। अभी कुछ टिकट्स अवेलेबल हैं, इसलिए ज्यादा देर ना कीजिए आप। यहाँ बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है ये। जैसे आपने कहा कि पहले दिन के जितना भी गेट मनी होगा वो फ्लड फैक्ट्रीज को जाएगा। एक शानदार इनिशिएटिव है और ज़्यादा महंगे टिकट्स हैं भी नहीं, रीजनेबल हैं। VIP के भी आप देख रहे थे, तो जाना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को टिकट्स खरीदने चाहिए। पुल कर दिया, यहाँ पर 4 रन बन जाएंगे। आखिर में मिस फील्डिंग हो गई माज खान से, लेकिन गेंद उनसे दूर होती जा रही थी। बड़ी अच्छी प्लेसमेंट थी हारिस सोहेल की। ये अब खतरा बनते जा रहे हैं। यहाँ फील्डिंग का बहुत बड़ा मसला रहा है। अगर आप इतने आसानी से रन्स देते रहेंगे तो कैसे मैच जीता जाएगा। अभी इससे पहले हमने देखा एहसानुल्लाह ने और इस बार माज ने। हारिस जिस तरह
ये स्ट्रोक दर स्ट्रोक खेलते जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रन बनाने की जो दरकार जो शरह है वो 9.2 है, और इनकी ख्वाहिश है कि 10वें 12वें ओवर तक जो है ये 10 से आगे ना जाए। विकेटें पहले ही गिरी हुई हैं, अगर ऐसे में रन रेट भी बढ़ने लगेगी तो फिर दबाव दोहरा हो जाएगा, उसे झेलना मुश्किल हो जाएगा। अभी हुसैन तलत को बैटिंग के आना है, अमाद बट बड़े हिट मारते हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप सबसे क्रूशल है। 25 रन पर पहुंच गई है, ये सबसे एक्सपीरियंस और सीजन बैटर्स हैं दोनों बलोचिस्तान के लिए। और शानदार शॉट, शानदार चौका। हारिस आज विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, खुल खेल रहे हैं इस वक्त लेफ्ट हैंडर। जी आज अलग मूड में नजर आ रहे हैं। ये फॉर्म पिछले मैच में भी नजर आई थी और आज तो कमाल का ही आगाज किया। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से रूम दिया अपने आप को और टाइम किया बॉल, और यही खसूसियत है हारिस सोहेल की, जब यही खेलते हैं तो सब देखते रह जाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से 4 रन हासिल किए। ऐसा लग रहा है जैसे आज शायद दिन हो हारिस का। हाँ, हारिस को जब हम फ्लो पे बैटिंग करते हुए देखते हैं तो लगता है कि जैसे बहुत ही आसान पिच हो। 66 पर 3। This is going to be a very crucial partnership between Ali Waqas and Haris Sohail. Haris Sohail is the key, of course. He can play that anchor role that Sahibzada Farhan did. Of course, he was from the top order, but right now they're on the right track. Wickets, yes, 3 down, but 66 in 8 isn't a bad ploy for them. Server to continue. Long way to go. Still 109 required, but they need to keep this partnership going for at least another 4-5 overs. With that scoreboard ticking for sure. Ali will have to do a little more than what he's done up till now. Kept low. That's been the case with this pitch. If he'd not banging the ball hard into the pitch, then it'll have its variable bounce, and we've seen some of them just hitting around the shin area. Yeah, as a batter, you need to keep that in mind. Should be keeping your head crouched and weight a little bit on to the front foot, except facing Ahsanullah. Others don't have that extraordinary bounce or pace. Might just stay ahead. Keep your weight on the front foot. Try to meet it earlier than usual. Slight change in field. Deep square leg comes into the circle. Long on, long off. Deep covered. Quick single there. Well, let's see, Marina, what are the possibilities of the result of this match? What effects will it have on the points table? Lots of teams on 10 points, but the net run rate is the issue. You see the extreme right column, that's the worry. KP, if win this, then they're good, 12 points. If they lose this, they'll have the fear of being left out from the top 4. And same is the case with Balochistan.
Picks up nicely. The pace is not there as quick as the other fast bowlers, so just a good shot in position early. That's one thing you can associate with Haris. He always had that opportunity of scoring a boundary back of his mind. He reads the field placement really well. And whenever there's the slightest of chance to hit 4 or 6, he'll go for it. You cannot bowl him straight, you cannot bowl him there. Especially with that field. You've got 2 men inside the circle behind square. Now they're changing it. He's the main key. He will craft that boundary option every now and then because of his strength. So not the usuals. Third man in now. It's the end of the over. 9 gone, 74 for 3. It's been the fast bowlers who've done well economy-wise and also amongst wickets. Abbas Afridi and Ehsanullah. Abbas, brilliant first over, 2 wickets straight away. Hasibullah and Bangalzai. Another change in bowling coming up. Let's have a look at the wickets. The first one, Bismillah. He was always going to be a key in this run chase. I don't think it was a smart choice of shot, especially against Ehsanullah. He was always going to get some extra bounce. This one, it was there to be hit, but just hurried on to him, and a good catch by Sarwar. Well judged. This one, a little too many shots for Hasibullah. Again, you can argue that these deliveries were there to go after, but just the execution, that's where they've been lacking, Balochistan. You know what's the real difference in these 3 wickets and Balochistan? Is the catching. Sun setting here in Multan, and the lights are coming on. And this is the last time in the league stage. Tomorrow we have the semi-finals. So by tonight, we'll have the top 4 that will make through. Maz, he was left out yesterday, but the leg spinner has been included in the side today. 3 changes for KP. They've strengthened their bowling today. I was asking Khalid Usman, does he feel he was a bowler short? And he was of the opinion that there are lots of options available to him, but a frontline ball. Leg spinner has been included. Abbas comes in place of Imran Senior. Should be a couple here, easy. Yeah, they needed surfaces like someone Maz Khan. He had few games. It was good. They need wickets. Any team will need wickets on these surfaces. It's not about containing runs. Shot. Improvisation. Taking a bit of risk and awarded the result with a boundary. And Maz Khan shouldn't mind that. It was a good delivery, just a better shot. Already, he was ready to play it. Let that ball way in front of him create that gap. He kept it onto the ground by rolling his wrists. He's going to go for runs, that's for sure, but can he provide a breakthrough? Just one. We just got to keep an eye on that required run rate. That's 9, just above 9.
The good thing is that they're around 8.5 at the moment. Wickets has to be kept in consideration. They do bat deep. They do have options available. Balochistan. They will have Ahmad Butt to be the finisher. Hussain Talat also is yet to come out. Easy one. Good ball, Maza, very well ball, Maz. KP cannot afford to be complacent. Yes, they've got a good total, but right now this partnership is brewing. 10 gone, Balochistan 84 for 3. Proud sponsors of the National T20, Kingdom Valley Royal Lifestyle. Get onto their official Facebook page and win exciting prizes and be the winner that you always want to be. Multan Stadium seeing the sunlight for the last time in the league stage. The comparison shows that Balochistan is ahead. It's just ahead in wickets as well. That's the bit that they'll be concerned about. But like I said, my first few words in this stint, that if they can bat up to over number 14-15, provide a platform to Hussain Talat and Ahmad Butt, they'll be in the game. He's done well, coming into the playing 11, getting those 2 important wickets. Cross-seam delivery, he's mixing it up. Again, if we talk about from KP's perspective, they have a lot of options, bowling options. But where you can create an impact, that's one to think about for Khalid Usman. I was just about to say that I like it. Sarwar and Abbas are still bowling over the wicket to the left, 2 left-handers. That angle doesn't really allow them to work the ball around on the onside, but this is the fear. That probably he gripped it too hard, the ball. If he comes round the wicket, yes, he'll be creating that angle to come into the left-hander, but that also provides that little bit of fear being put away somewhere around short fine leg for a boundary. He's played it in through the line, but it's got more height than distance. Fielder under it. Oh, he's dropped it. A bit of Balochistan there from the captain, Khalid Usman. That should have been taken. That was the breakthrough they were looking for. That would have really brought them into the game. Oh, Khalid Usman, you cannot blame anyone else. He's looking at his hands, a bit sweaty, but this was the opportunity. Dropping Haris on 34 was easy catch, had all the time. Couldn't really grab it on rebound as well. But have a look at that. Straight in front of his eyes. Just in and out. It's so important. Now the fielder, Khalid Usman, would be hoping the ball comes to him again and he can rectify that. But it doesn't happen that way. Sometimes a ball just comes to you once in a game. And that's your opportunity. Hard hands. That's all. No give whatsoever. Really hard hands. You see, it just popped out of it. 50 partnership up. This is going to hurt KP. They shouldn't be repeating the mistakes they did the other night. They've had made errors, KP. And some of them would be, looked at like this. There was Hassanullah. Happened with them yesterday as well. Slight fumble, that was a bit harsh.
But this one should have been stopped, dived over it, and the catch just now from Khalid Usman. Did I hear no? No, I didn't. I think it was Haris because for a moment I thought it might have got away. It was timed, but not that perfectly to travel to the boundary. Right, where is this game going? This is the drop. Again, hard hands. Khalid Usman usually very good in the field as a captain. Oh, the look of disbelief on his face. End of the over. It's 11 gone. 88 for 3. Khalid, Shabba Khalid. Shabash. Over. Ready, se boundary wala ready, Sheikha Shabash. Still quite warm in Multan. Especially the afternoons, the sun is very sharp, which just cools down considerably in the evenings. We are entering winters, but a little slowly and sluggishly. Easy one, easy one. Good, sir, Khalida. Been keep saying that since the start of this tournament. We're entering winters, but I don't think so. Well, we just fixed Rawalpindi at the right temperature, and we had to leave and come here. Big shot coming, big shot coming. Come It on, takes some time to make the weather understand that we're suffering. easy one. Very well, Khalida. Khalid's spell will be crucial, because this can go either way. Balochistan would like to score runs against him. If he can pull off a couple of overs, good overs, say around 6 or 7 runs each, that'll be great help for KP. Yeah, not bad. Oh, they're coming for a run. What's wrong? What's going on? It's like deja vu for them. You drop, you misfield, and all of a sudden it hits to you that maybe you're not in the game quite enough. These are simple mistakes, the basics they're committing. And that'll be a big shot. The moment he left the bat, you know that he's earning himself at least a boundary. The big vacant zone there. These two will go after KP because Khalid Usman is way too predictable. They are targeting the stumps, all of the bowlers. Just few deliveries to watch out, and then he decided to come down, dancing, and hit that wristy shot. Need to set up a plan for these two batters, otherwise they're not easily going to give away their wicket. Call for a catch and taken. Khalid Usman strikes, and that is exactly what they wanted. Crucial over, could have gone either way. It's gone KP's way, and they've got the wicket of Ali Waqas for 19. Trying to capitalize this time. Splatter couldn't really get to the pitch of the delivery, and it hit the toe end of the bat. Shahzada Farhan has been exceptional, and he's disappointed. 12 overs gone, 95 for 4, Balochistan.
हुसैन तलत आ मिले हैं हारिस सुहेल से। यहाँ 8 ओवर्स में 81 रन्स बलोचिस्तान को जो चाहिए हैं। आजकल की जो क्रिकेट हो रही है इसमें ये रन्स बन सकते हैं अगर एक सेट बैट्समैन जाएगा ऑल द वे। और जिस तरह की फील्डिंग अब तक की है मिली जुली खैबर पख्तूनख्वा ने, अगर ऐसी गलतियां उन्होंने की तो फिर बलोचिस्तान का रुकना मुश्किल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बलोचिस्तान के लिए कि वो 2 नए बैटर्स इस स्टेज पर अफोर्ड नहीं कर सकते। हारिस का रोल बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो गया है। अच्छा खेले हैं आज, 25 गेंदों पर 38 रन अपनी पुराने रिदम में नजर आए हैं। और जब वो खेलते हैं तो खूब खेलते हैं। स्क्वायर लेग फील्डर को स्क्वायर के पीछे किया है विकेट कीपर अफरीदी ने कप्तान के मशवरे के बाद। ऑफ साइड में एक डीप पॉइंट है। इसके अलावा हुसैन तलत के लिए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। तो स्पिनर को सामने खेलना ही पसंद करते हैं, स्वीप शॉट अच्छा खेलते हैं हुसैन तलत। और अली वकास जो है अच्छा साथ दे रहे थे, बल्ला उनके हाथ से मुड़ गया ये छक्का लगाने की आरजू में और एक आसान सा कैच उन्होंने पेश कर दिया साहबजादा को। जो हम काफी देर से ये बात करें कि दूर से यहाँ शॉट लगते नहीं हैं, पिच तक पहुंच नहीं सके और बल्ले के नीचे लगा बॉल, बिल्कुल ऊपर पहुंचते तो छक्का लग सकता था। लेकिन अब यहाँ पे बाएं हाथ के दोनों बैट्समैन एक मरतबा फिर इकट्ठे हुए हैं। काफी देर से जो बैटर्स खेलने आए बलोचिस्तान के वो सब के सब लेफ्ट हैंडर हैं। बहुत ज्यादा वक्त जाया हो गया है इस माज खान के ओवर से पहले भी और इसके दौरान भी। अभी तक विकेटें जरूर गिरती रही हैं लेकिन रन औसत पर बहुत ज्यादा समझौता नहीं किया बलोचिस्तान ने। यहाँ एक बात तो हम पूरे वसूख के साथ कह सकते हैं कि हारिस को अब सर बसर जाना होगा। हुसैन तलत को ज्यादा बड़े शॉट्स खेलने होंगे स्पिनर्स के खिलाफ। दूसरा रन लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। आमिर अजमत थे स्क्वायर लेग पर फील्डर। ये अच्छी हिकमत अमली है। हुसैन तलत ने आते ही जाराना अंदाज अपनाया और जो बात हारिस के बारे में आप कह रहे हैं बिल्कुल लगता है कि टीम प्लान भी यही है। अभी बैटिंग बाकी है बलोचिस्तान की, इसके बाद अमाद भट्ट भी हैं, अच्छे फिनिशर हैं वो। उठाकर खेला लेकिन फील्डर बहुत पीछे हैं क्योंकि बाउंड्री का फासला भी खासा ज्यादा है। अच्छा कंट्रोल नहीं कर सके, गूगली थी। आदिल अमीन ने सेफ खेला, बाउंड्री रोकने को तरजीह दी। गेंद वैसे भी काफी दूर थी उनसे। 100 रन भी मुकम्मल हुए बलोचिस्तान के। बाहर निकले फुल टॉस पर जा लिया और यहाँ पर दूसरा रन बनना चाहिए लेकिन हारिस सुहेल जो हैं उन्होंने कदरे वो देर से फैसला किया कि उनको वापस जाना चाहिए। पहला रन लेते हुए बहुत ज्यादा तो दिखाई नहीं, जो एक हरारत नजर आनी चाहिए थी, इंटेंट नजर नहीं आई रनिंग के मामले में। अभी तक आज बलोचिस्तान ने भी फील्डिंग में खासी गलतियां की, उन्होंने कैचेस छोड़े और ये बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और क्लियर कर दिया मिड ऑफ को। और ये वाइटल हिट है, जरूरत थी हुसैन तलत और बलोचिस्तान को मोमेंटम रीगेन करने के लिए। 107 पर 4। लगता है बलोचिस्तान ओवर टू ओवर खेल रहे हैं। इस ओवर में बाउंड्री की जरूरत थी, रिस्क लिया हुसैन तलत ने ओवर की आखिरी गेंद पर। इस मर्तबा जो फॉलो थ्रू था आप देखिए, बिल्कुल उनके कमर से बल्ला जा टकराया। पूरी शॉट उन्होंने खेली, पिच तक नहीं पहुंचे लेकिन 6 रन हासिल किए
क्योंकि इस चीज़ की का अंदाज़ा था। ये देखिए, इससे आपको लगता है कि उन्होंने खतरा मोल लिया, लेकिन खुश नजर आए कि वो हरबा उनका कारगर हुआ। 13 के बाद 107 पर 4। खालिद उस्मान एक विकेट जरूर ले चुके हैं, लेकिन दो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करना ये किसी चैलेंज से कम है नहीं, जबकि दोनों स्पिनर्स को खेलने में भी महारत रखते हैं। वाज़े प्लान नजर आ रहा है। हारिस सोहेल लंबा जाने की सोच रहे हैं, सेट हैं, इसलिए उन्हें स्ट्राइक रोटेशन में कोई मसला नहीं है। हुसैन तलत को शायद लाइसेंस मिला हुआ है कि आप बेखौफ होकर खेलें। पिछले ओवर में 12 रन आए, 10 से कम पर ओवर इनकी रिक्वायरमेंट है बलोचिस्तान की आखिरी 7 ओवर्स में। रिवर्स खेलने के लिए चले गए थे, जानते थे इनकी तीनत को। वो बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं हुसैन तलत के खिलाफ। खालिद उस्मान यूं ही उन्होंने देखा कि बल्ला जो है वो ऑफ साइड में जा रहा है, गेंद लेग साइड की तरफ कर दी, विकेट कीपर भी नहीं इससे ले सके। हाँ, इस बार उठा दिया और गेंद गई ऑल द वे। आला शॉट, बड़ा उम्दा फुटवर्क और विद द स्पिन छक्का लगाया हारिस सोहेल ने। जिस खदशे का आपने इजहार किया था, लेफ्ट आर्म स्पिन बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर्स के अगेंस्ट, ये अच्छा मैचअप नहीं है केपी के लिए। हारिस ने इस चीज को रियलाइज किया और भरपूर स्ट्रोक सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। ये अच्छा पैसेज है बलोचिस्तान के लिए। आड़े हाथों लिया उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान को। थोड़ी देर हवा में रही और उसके बाद हाथों हाथ ले लिया। आदिल अमीन ने बहुत ज्यादा स्टंप्स को छोड़कर पीछे चले गए थे ताकि ऑफ साइड में जगह बना सकें, लेकिन ज्यादा स्क्वायर खेल बैठे और हारिस चल दिए। खालिद उस्मान ने कहा, आप किस मैचअप की बात कर रहे हैं, मैं विकेट लेकर दिखाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को दूर किया हारिस से, टाइम नहीं कर सके। अच्छा लो कैच, प्रेशर कैच आदिल अमीन। काफी गलतियां फील्ड में हुई दोनों टीमों से, लेकिन ये एक अहम कैच था। हारिस सोहेल की शानदार इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। फायर जरूर चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इसमें कोई मसला नहीं था यहां पर। टिप जरूर हो रही थी, लेकिन आदिल अमीन की उंगलियां जो थीं वो गेंद के नीचे थीं। गेंद जमीन पर टकराने के बजाय सीधा उनकी उंगलियों और हथेलियों में जा गिरी। ये हारिस सोहेल को वापस जाना होगा। हसन रजा टीवी अंपायर हैं जिनको ये फैसला करना है। दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देख सकते हैं इनके दोनों हाथ जो हैं गेंद के नीचे हैं और किसी भी मौके पर गेंद जो है वो घास के करीब नहीं है, इसमें तो कोई शुबा होना ही नहीं चाहिए। बड़े बड़े हाथ हैं आदिल अमीन के, और इससे बेहतर वीडियो की गवाही हो भी नहीं सकती थी। और ये कॉन्फर्मेशन आ गई। हारिस सोहेल अपनी लिस्ट सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें अफसोस होगा। एक अहम मौके पर उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। छक्का लगाने के फौरन बाद 47 पर आउट हुए बलोचिस्तान 115 पर 5। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ये लुटता पिटता देखना चाहते थे दोनों बैट्समैन इस ओवर में, इसलिए ज्यादा शॉट्स खेल गए। हालांकि
जो सूरत हाल थी, रन आ रहे थे और एक ओवर में आप एक खतरा मोल लेना वो काफी हो सकता था। यहाँ पर हमने 3 शॉट्स ऐसे देखे जिसमें खतरा मोल लिया गया और उसी में फिर विकेट भी गिर गई। आमतौर पर अम्माद भट्ट जो हैं ये आखिरी 3 से 4 ओवर्स में बैटिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन ये शॉट इनके जल्दी आने की वजह रहा। और किनारा लग गया। आउटफील्ड खासी तेज है इस इलाके में, यहाँ पर 2 रन बन जाएंगे और तीसरा भी हासिल करेंगे हुसैन तलत, जो बड़े अच्छे एथलीट हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अम्माद भट्ट पहुंचे थे? अम्माद भट्ट का कोई इरादा नहीं था तीसरे रन के लिए वापस आने का, और पूरे वसूख के साथ बता रहे हैं इस वक्त कप्तान खालिद कि ये विकेट मिल गई उनको। बहुत ही आला क्रिकेट खालिद उस्मान की, क्योंकि वो विकेटों से एक कदम आगे आ गए थे। जो थ्रो का फासला था उन्होंने कम किया और विकेटों को बॉल जल्दी लगा दी। क्या ये जल्दी जो है वो फैसला कुन साबित होगी? अपनी तरफ से उन्होंने थ्रो के रास्ते में जाकर यहां से ये देखिए बॉल को काफी जल्दी लिया और अम्माद भट्ट को रास्ता दिखाया वापसी का। इस विकेट का सहरा यकीनन खालिद उस्मान के सर जाएगा। जो रिवायती तरीका होता है विकेटों के पीछे बॉल लेने का, उसके बजाय मॉडर्न डे जो अप्रोच है विकेटों के सामने उन्होंने बॉल लिया और अम्माद भट्ट क्रीज से पीछे रह गए। यहाँ और एहसन रजा के लिए ये एक और आसान फैसला होगा। गो के सर्वर जो हैं हम देख सकते हैं स्टंप्स के वो सामने हैं, लेकिन ये जो बेल्स हैं उनको भी हम उखड़ता हुआ देख रहे हैं, इसलिए ये भी हुक्म जल्दी आ जाना चाहिए बैट्समैन के खिलाफ। और अम्माद भट्ट जो थे उनका इरादा सिर्फ 2 रन लेने का ही था, उनको तीसरे रन पर उकसाया हुसैन तलत ने। अम्माद भट्ट का ख्याल था कि शायद जो है हुसैन तलत का डेंजर एंड है। तो एक और विकेट गिर गई। ये 3 गेंदों में दूसरी कामयाबी खैबर पख्तूनख्वा को, और ये बड़ा खतरा बन सकते थे अम्माद भट्ट। ये अच्छे फिनिशर हैं, सिर्फ 2 रन बना सके। खालिद उस्मान की काविश के जरिए इनकी भी विकेट गई 117 पर 6। कप्तान यासिर शाह आए हैं। खराब क्रिकेट बलोचिस्तान की पिछले ओवर में मतलूबा रन्स हैं वो आ गए थे, लेकिन विकेटें गवा दी इन्होंने। 2 खिलाड़ी आउट होने से इस मैच का पांसा अक्सर पलट गया है और यहाँ नेट रन रेट पे भी नजर रखनी होगी बलोचिस्तान को। अब लगता है कि वो काफी ज्यादा पीछे रह गए इस मैच में। टाइम तो काफी बाकी है, लेकिन 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। कप्तान यासिर शाह 44 उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर है। जी हाँ, ये अभी मैच किसी तौर पर खत्म नहीं हुआ। इन 2 विकेटों के 2 रन में गिरने के बावजूद वो के मैच में उतार चढ़ाव जरूर आते रहे हैं, लेकिन रन्स हमेशा मौजूद रहते हैं। और यूं ही एक पार्टनरशिप पनपने लगेगी, एक बार फिर जो फील्डिंग टीम है उसको दबाव की हिद्दत महसूस होगी। और ये भी गुगली यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सामने यासिर शाह रीड नहीं कर सके। अंपायर के फैसले पर हैरानी जरूर है, लेकिन ये अटल है। देखना ये होगा कि क्या ये बॉल ज्यादा ऊपर तो नहीं लगी थी, क्योंकि लाइन तो सही थी। गुगली से मुकम्मल तौर पर बीट हो गए। अगले कदम पे रोल के ऊपर लगा उन्हें बॉल। इस विकेट पे बाउंस इंडिफरेंट जरूर रहा है, लेकिन शोजब रजा ने फैसला दिया मास खान के हक में। एक मरतबा फिर गुगली से उन्होंने बैटर का शिकार किया इस टूर्नामेंट में। इस मरतबा यासिर शाह पहली ही गेंद पर आउट हो गए। बलोचिस्तान की इनिंग्स लड़खड़ाते हुए 117 पर 7।
आगे आ गया ये चीता चीता विकेट अच्छा मार दे में विकेट बाबा पट्टी हां एलडी आपको ज्यादा क्या बात हो सकता क्लिप कर रहा हूं हम आजा में विकेट ना शाबाश काशिफ भट्टी भी अच्छी हिट लगा लेते हैं। 3 विकेटें 115 से लेकर 117 के दरमियान 3 विकेटें गिर गई हैं। 34 नॉट आउट इनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर है। पिछले मैचेस में हमने देखा है अच्छी हिट लगा लेते हैं। माज ने स्लिप ले रखी है, लेकिन क्या वो दोबारा गूगली करेंगे? ये जितनी ज्यादा गूगलीज करते हैं इनको ऑफ स्पिनर की तरह ही खेलना चाहिए, जो वो एक तरीका कार अपनाया था काउंटी क्रिकेट में। ये गेंद रोल पर लगी, खासा आगे जाकर खेले थे, इसीलिए हैरानी हो रही थी। गेंद को अभी कुछ फासला तय करना था। शक का फायदा यासिर को मिल सकता था यहाँ। जी बिल्कुल, यासिर मायूस होंगे इस फैसले से, बल्कि मायूस थे जब वो बिल्कुल विकेट छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और एक बार फिर अंपायर को मुतासिर किया। जी हाँ, ये बैक टू बैक 2 विकेटें मिल गई और रिवर्स शॉट खेलने हुए ये आउट करार दिए गए। और हुसैन तलत लगता है कि ये कसूरवार थे। एक और इंडिफरेंट शॉट, विकेटों पे विकेटें गिर रही हैं। हुसैन तलत ने फिर ऑप्शन लिया और इस मर्तबा शोजाब का फैसला बिल्कुल बजा ठहरा। बॉल विकेटों के अंदर पिच हुई और ज्यादा हाइट भी नहीं थी, आगे गिरा हुआ बॉल था। 3 रन के अंदर अंदर बलोचिस्तान की ये चौथी विकेट गिर गई है। हुसैन तलत 10, बलोचिस्तान 118 पर 8। खुरम आ गया, खुरम है एमडी अच्छा मारते, ये भी अच्छा मारते, शाबाश। बिगली नहीं करना इसको। ये बलोचिस्तान की जो बैटिंग है ये आसमान से गिरकर ये बिल्कुल खजूर में अटक गई है यहाँ मुल्तान में। 118 पर 8 खिलाड़ी आउट हैं और सिर्फ 2 बार और करना है खैबर पख्तूनख्वा को सेमीफाइनल खेलने के लिए। पिछले 2 ओवर्स में 5 सा पलट कर रह गया। माज खान जो है ये जिस तरह गूगलीज का ये वाफिर इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्टिन क्रो ने एक हरबा निकाला था, ये पहले देख रहे थे, ये गूगली ज्यादा टर्न नहीं हुई, बैट्समैन टर्न हो गए थे और स्टंप्स के सामने था उनका पैड। तो मैं बात कर रहा था कि मार्टिन क्रो जब काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने मुश्ताक अहमद को खेलने का एक हरबा ये निकाला था कि उनको ऑफ स्पिनर की तरह खेलते थे। मुश्ताक अहमद गूगलीज का बेजा इस्तेमाल करते थे उस दौर में, उनको बहुत विकेटें भी मिलती थी उस गेंद पर। शुमिया किस्मत के मुश्ताक अहमद बलोचिस्तान के कोच हैं और आज उनके बैटर्स जो हैं उसी गूगली का शिकार हुए। गूगली के मुतालिक काफ़ी कहानियां भी मशहूर हैं। खुद मुश्ताक अहमद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जब वो वसीम अकरम की कप्तानी में खेलते थे और काफ़ी यहाँ पर शायद अरशद इकबाल हैं, इनका घुटना लगा जमीन में ये बॉल पकड़ते हुए। अभी कुछ देर पहले तक 95 रन पर सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी और हारिस सुहेल और अली वकास की पार्टनरशिप जो है वो बड़ी आसानी के साथ खेलते हुए जा रहे थे। ये देखिए ये यूं ही गिरे हैं, एक घुटने के बाल को तकलीफ हुई है। अरशद इकबाल फास्ट बॉलर्स का और इंजरीज का वैसे भी एक चोली दामन का साथ रहा है। थोड़ा सख्त मौसम है क्रिकेट खेलने के लिए और ये देखिए वो जो विकेटों की झड़ी लग गई यहाँ मुल्तान में, सिर्फ में कोई फील्डर नहीं था लेकिन तीसरा रन लेते हुए रन आउट हो गए। बड़ी फुर्ती के साथ ये इनका पीछा किया
अफरीदी ने, और देखिए उनका थ्रो भी बड़ा लाजवाब था, विकेट कीपर की बजाय वो बॉलिंग एंड पर आया। या यासिर शाह जो है कम नसीबी थी, लेकिन हुसैन तलत की बिल्कुल नहीं। माज खान ये भी नया टैलेंट है, नई दरियाफ्त है पाकिस्तान क्रिकेट में। इतना ज्यादा स्पिनर्स पर दारोमदार होता नहीं है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन यहाँ आज इनको खिलाया गया और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। ये उनके करियर का सबसे कामयाब ओवर है, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। एक 119 पर 8। हारिस सुहेल के अलावा कोई भी बैट्समैन आज जमकर नहीं खेल सका है। रेत की दीवार साबित हुई है बलूचिस्तान की जो बैटिंग है शान मसूद की अदम मौजूदगी में। शायद हारिस सुहेल को 1 डाउन खेलना चाहिए था, क्योंकि आपके जो बेहतरीन बैट्समैन होते हैं T20 क्रिकेट में, उनको 1, 2, 3 तक ही खेलना चाहिए, ज्यादा ओवर्स उनको मिलने चाहिए कह सकते हैं, लेकिन शायद वो मिडिल ऑर्डर को ग्लू करने के लिए उन्होंने उनको 4 पे खिलाया। 95 पे 3 आउट थे, उस वक्त ज्यादा बुरी सूरत हाल नहीं थी बलोचिस्तान की और रन रेट भी ठीक चल रहा था। 2-3 ओवर्स में ही पांसा पलटा मैच का। एक और विकेट। यहाँ पर ये इनिंग्स बड़ी तेजी के साथ सिमटने लगी है। अब काशिफ भट्टी की बारी थी, जिनने गेंद खालिद के हाथ से निकलने से पहले ही वो बाहर आ गए थे वार करने के लिए। खालिद का बड़ा इंटरेस्टिंग रनअप है, वो सीधा भाग के नहीं आते, बैट्समैन को देखते रहते हैं आखिरी वक्त तक। इस मरतबा भी जल्दी कर गए काशिफ भट्टी क्रीज से निकलने में और खालिद उस्मान ने वो देख लिया। भट्टी 1 रन बनाकर वापस हुए। 120 पर 9 बलोचिस्तान। जुनेद खान है नए आने वाले बैट्समैन। जुनेद को मसला नहीं होगा रेहान अफरीदी और खालिद उस्मान की बातचीत समझने में, क्योंकि ये केपी का हिस्सा रहे हैं काफी देर तक खुद भी। लेकिन उनको बॉलिंग को समझने में जरूर मसला रहेगा। भाई दोनों स्पिनर्स ने कमाल कर दिखाया, अपने फास्ट बॉलर्स को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है खालिद उस्मान और माज खान ने। ये देखिए काशिफ भट्टी इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे मुल्तान के पुराने किले की जानिब, लेकिन गेंद जो है उनके बल्ले से बहुत ही नीचे रह गई और अब उनका अपना किला मस्मार हो गया। या किला जो है ये पूरी टीम का ही, पूरी बैटिंग लाइनअप का ही मिसवार होकर रह गया है और मायूस कुन कारकर्दगी रही है। आपको इन दिनों T20 मैच जीतने के लिए खेल के तीनों शोबों में आपको अपनी महारत दिखाना होती है और बॉलिंग ज़रूर बेहतर की बलूचिस्तान के बॉलर्स ने, लेकिन फील्डिंग और बैटिंग बुरी तरह नाकाम रही। तो इसलिए इस वक्त नविश्ता दीवार है जो सूरत हाल बलूचिस्तान के सपोर्टर्स के लिए 122 पर 9।
total fling for Balochistan. And this guy, I've been saying that you can put some runs in his account, but he'll give the wickets. Gone aerial. Has he got the connection all the way? Yes, he has. Maximum from Khurram Shehzad. Some resilience there. And some fun. That is what they can do from here on. Khurram Shehzad goes in his zone. And the power and the bat, it looks really nice. The way he looked at it. Before this delivery in last 25 balls, just 27 run scores and 6 wickets. That's a total flip out. And he goes again, this time leg side, but the fielder is there. Oh! He went straight and had to adjust himself. Another drop catch. This time it's the tall guy, Arshad Iqbal. Just went big. Returning the favor. You drop us, we'll drop you too. Easy one, easy one. Single there. I think he was unable to judge which way the shot was going because he sprinted straight and then had to go towards his right. That's why he lost it. This one's big. This one's traveling and it's into the stands. Something to cheer for the crowd here. Khurram Shehzad, he's putting up a fight for the last wicket. Yeah, the top orders should learn something from here, from Khurram Shehzad. Look at those hits. That is a big hit. Force behind it. The idea was right. That cow corner, getting it easily. Down again. He's not going to stay in his crease. That's one way to defend. Just go on attack. Be careful. He's going to bring back his fast bowler then. If you keep hitting these spinners. This time it's Junaid Khan, but I don't think he's found the connection. But he did found the fielder. And that's it. Balochistan. Some fireworks from Khurram Shehzad. But KP, the way they came back, courtesy to Maaz Khan, took the game away from Balochistan within a matter of overs. Yeah, also this man on your screen, Khalid Usman, after dropping the catch, he was under pressure, but came back with that brilliant run out and a couple of wickets to his name also. It's been a thorough professional performance by this KP side. They were down and hurt. They lost 4 games and this was an important one. They had to win to stay in the tournament. So they did. Khalid Usman must be a very proud captain, and this is how it all ended. Junaid just wanted to go big, just like Khurram Shehzad, then lost his wicket and ended the match. Finally, keeping, just getting some momentum. Their first win after 4 games, straight lose. They'll be happy. There were a few nerves when Haris Suhail was in the middle, but the way they turned things for themselves has been brilliant. A big win by 38 runs, and this is going to haunt Balochistan. Yeah, they look to be in trouble, Balochistan, because this is a big margin, 38 runs, in a match where you had to keep one eye on the net run rate. This is a big loss to them. It would be very interesting to see points table now. But KP are surely in. They have won this game and gone right at the top of the table now, where they deserve, where they belong to. What Balochistan can do now is just wait for the other game. They will be depending on the results. For a moment, it looked like Balochistan had everything in control. The bits and pieces, apart from Haris Suhail, 47, falling short of that 50. Sant Alat was required to go big, but scored only 10 runs, 19 from Ali Waqas. That was a partnership Balochistan was bagging on. But then, have a look at that. Hardly anyone getting into double figures. Maaz is written all over it. Spinners have been brilliant. 3 wickets for Maaz Khan, a touch expensive, but he would take it. And 3 wickets for Khalid Usman, also brilliant economy, just 9 runs. 2 wickets for Abbas Afridi, 1 for Ehsanullah. I think that new ball pair, they've been brilliant. They put the pressure
early on in the inning, and the rest followed. Khyber Pakhtunkhwa, finally a sigh of relief, managed to bring something back in their favor. That's how the chase started. A lot was dependent on Bismillah. Hasibullah on the other end started off well, getting those boundaries straight away. Some flicks, risky play work from Hasibullah. But Bismillah Khan were heavily relying on him. He did manage to get few boundaries every now and then. Server straying down the leg side was punished, and then this happened. It wasn't a wise shot against Ehsanullah. Literally gave up his wicket. The resilience again started from Balochistan. Bangalzai managed to get few runs. That kept low, but runs, that was all that mattered. And then this good catch from Server. He'd be striking back at this moment. It was a good take from Shahzada Farhan. Collision, but they managed to keep hold on it. Haris Sohail, he was the key. He was always the key in this run chase. He came in, he started to exploit the gaps. Some lousy fielding allowed him to gain momentum. He went into the vacant zone. He took spinners apart along with Ali Waqas, and this partnership started to grow. And that was only good time for Balochistan in the side. They were given some opportunities, and this one was a sitter that was dropped by Khalid Usman. You don't expect that from KB side. They felt a little bit of pressure after that, but Ali Waqas, one shot too many. He tried a few tricks, and after that they didn't make any mistake. Maaz Khan was brilliant, got some crucial wickets. This one was a huge hit by Haris Sohail, and soon after that he lost his wicket. One shot too many, as I said. They kept on taking wickets. That was the beauty of KP's bowling side. And this was a brilliant presence of mind by Khalid Usman and Abbas Afridi's throw. That probably changed the match, in my opinion, because this was the last partnership for Balochistan, and then everything fell apart for them. They just rattled inside 2 overs. Wicket kept on tumbling. Maaz Khan was brilliant. Just wonder why he was dropped earlier. And then in the end, it was just a matter of time when KP got them out. A few resilience shown in the end, but it all ended as it was supposed to be. KP winning by 38 runs. It was always going to be a good contest. That's how the things unfold. Khyber Pakhtunkhwa, they batted well. Sahibzada, superb innings, 102, that's what they needed from their top order. Rehan with 34, Kamran 26, important contributions. Junaid managed to bag 2, so did Yasir Shah with 1. In reply, Haris 47, that was the resilience. Ali with 19 and Khurram 17. No other batter could have put another hand. Khalid and Maaz shared 3 each and 2 for Abbas. And in the end, Khyber Pakhtunkhwa turned the things around and won by 38 runs. This is going to be very interesting. The action is not all over. Khyber Pakhtunkhwa regaining their top spot. They've managed to get those 12 points. Balochistan, they will have to wait and see what other teams will do. They would just wish that Northern beat Southern. That should be a close game. That might, bring that net run rate in place. Otherwise, if ATF Southern Punjab wins, they've got that run rate high. Then Balochistan, they'll go through and Balochistan will be out. It's such a relief for teams like Central Punjab that they're a little touch upper in net run rate from these remaining sides. We'll take a break and we will join you with Sikandar Park for post-match presentation.
Hello and welcome to the post-match presentation of match 29, KP versus Balochistan. And a big winner, finally a win for KP, and that too by 38 runs. Before I call upon the captains and the player of the match, we welcome Mr. Mohammad Noman Ashraf, who is Sales Executive, Kingdom Valley. Thank you for joining us. And for the Kingdom Valley player of the match, none other than Sahibzada Farhan for his brilliant 102. And he has won this because he's hit it off 64 balls with 7 boundaries and 6 sixes. We'll call him to receive his award, 25,000 rupees cash, and of course the trophy from Mr. Mohammad Noman Ashraf, second 100 of the Kingdom Valley National T20. Superb performance and was much needed. We'll have a quick word with Sahibzada. बहुत ज़रूरत थी इस विन की टीम को, और आज जो परफॉर्मेंस आपकी रही, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आ रहे थे. क्या प्लानिंग थी जब आए थे बैटिंग करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ. यही माइंड में था कि अपना इंटेंट पॉजिटिव रखना है, और जिस तरह प्लान दिए उसी हिसाब से चल रहे हैं, उसी हिसाब से चलना है. क्या प्रेशर था आप पे, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस बैट से दी है थ्रू आउट केपी के लिए, लेकिन जब टीम को यहाँ जीत नहीं मिल रही तो एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर था कि मुझे इससे ज़्यादा शायद कुछ करना है? यही दरमियान में थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे थे, दरमियान में डॉट बॉल आ रहे थे, तो आज एज ए ओपनर मेरे माइंड में यही था कि मैंने सर्कल अच्छा करना, जिस तरह रेहान ने मेरे साथ दिया, और बाद में आपको जिस तरह हमने कवर किया तो बहुत अच्छा टोटल बन गया. चलिए, मोमेंटम आपको मिल गया है, उम्मीद करते हैं ये जारी रहे इंशाल्लाह. थैंक यू. साहिबजादा फरहान, Kingdom Valley player of the match. Now I'll invite Yasir Shah, the captain of Balochistan, to please come forward and have a quick word with us. What I like about Yasir is always smiling. यासिर, कोशिश तो आपने बहुत की होगी, लेकिन ये जो फील्डिंग का इशू है वो हो नहीं पा रहा सही, और ये मैच कॉस्ट कर रहा है आपको. साहिबजादा फरहान के 3 कैच ड्रॉप हुए. हाँ, फील्डिंग का तो मसला आ रहा है, लेकिन फील्डिंग को हम ब्लेम नहीं कर सकते, एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि हमने सारी जो है बॉलिंग में भी देख लिया, अगर बैटिंग में देख ले तो हमने पूरा क्रिकेट खेली है. शान मसूद की आज अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान एक अच्छा एडिशन रहा. रन्स जो बने हैं, आपने बैटिंग उनको दी पहले, कंफर्टेबल थे कि इस पिच पे चेसेबल है ये? इस पिच पे ये रन्स चेजेबल थे, हाँ, क्योंकि विकेट जिस तरह खेल रहा था, बल्ले पे बॉल आ रहा था और रन्स हो रहे थे, तो मैंने बैट्समैनों को ये किया कि सेंसिबल खेलें और अपने मतलब क्रिकेटिंग शॉट खेलें, तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके हमारे जो पहले के 3 बैट्समैन थे, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा मसला बना है. अभी आप बाहर नहीं हैं, अगले मैच पर डिपेंड करता है. अगर नॉर्दर्न जीतता है तो फिर आप लोगों के नेट रन रेट आपस में कैलकुलेट होगा. गुड लक फॉर दैट. लेकिन ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस रही उसको एंजॉय किया, इंडिविजुअली भी और टीम की भी? हाँ, एंजॉय तो किया, अपने टीम के लिए खेल रहा था और कोशिश करता कि अच्छी परफॉर्मेंस दो T20 में, क्योंकि यही वो लगा हुआ है कि मैं सिर्फ रेड बॉल का बॉलर हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ. वाइट बॉल पे भी अच्छी बॉलिंग हो रही है, अगर सारी टूर्नामेंट देखें तो अच्छी बॉलिंग की अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे प्लेयर सारे अच्छे खेल. थोड़ा सा फील्डिंग का मसला जो आखिर तक हम हल नहीं कर सकते, हमने प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन वही जो मिस्टेक हमने की है उसमें. चलिए, अगला मैच मिल के देखते हैं फिर इंशाल्लाह. Captain Yasir Shah. Now I'll invite Khalid Usman, the captain of KP. मैंने मिठाई मंगवाई है, वहाँ पहुँच जाएगी. क्या किया आपने आज? जब मैच स्टार्ट हुआ तो थोड़ा बिल्कुल फ्री माइंड से आए थे कि अब जो होगा देखी जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही था कि रिलैक्स लड़कों को किया और यही बताया कि मैच जीतना है, कि ताकि कॉन्फिडेंस आए, और कल बड़ा मैच है हमारा सेमीफाइनल, तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे सारे प्लेयर्स जो है वो फॉर्म में आ गए. माशाल्लाह साहिबजादा ने 100 किया, कामी ने नीचे से पिछले मैच में भी 50 किया, और बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, तो ये गुड साइन है. कुछ टैक्टिकल चेंजेस किए आपने आज जो टीम के अंदर लेकर आए? लेग स्पिनर को ऐड किया. जब कल बात हो रही थी हमारी कि क्या आप एक फ्रंट लाइन बॉलर मिस कर रहे थे, ये वजह आपको लगा कि कारआमद साबित हुई? जी बिल्कुल, आपने देख लिया, उसने रन भी दिए, लेकिन क्रूशल टाइम पे उसने विकेटें भी दिलाई है, तो जो प्लान दिया था उसी पे हम रहे, तो कामयाबी मिली हमें. अभी सिलसिला टूट गया है, तो उम्मीद करते हैं कि अब 2 मैच और रह गए. नहीं, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे तो रिजल्ट ही अच्छा होगा इंशाल्लाह. चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो. एंजॉय कीजिए आज का विन, फिर कल मुलाकात होगी. थैंक यू. और ये थे कप्तान Khalid Usman, the captain of KP, won the match by 38 runs and qualified for the semi-finals. That's all from the presentation. A crucial match coming up next in Kingdom Valley National T20 Cup. It's Northern taking on the local boys, ATF Southern Punjab. We'll watch you and join you from Multan Stadium live.